More or less the chapter already I have covered. So incidentally, we have got wonderful time slot for numericals. For the first time, we have got 2 complete classes to devote on numericals, because I've done rolling, I've done angular momentum. However, if you feel that some topic you haven't understood the way you want it, you let me know so that I can cover it. Similarly, online, if some topic especially somebody wants to be covered again, let me know. Today and in the next class, that is on 2nd, I think 2nd or 3rd January, I will be doing that topic again. Okay, so let's begin. Since I'm going to restart, let's begin with the 5 minutes recapitulation of this whole chapter. Quickly we will recap. Okay, whatever we have understood up till now. Okay, let's recapitulate in this format. Make a table. Write here translational dynamics. Write here rotational dynamics. You keep telling me. So if I write displacement here, how do you represent it? S. What is the displacement here? What is the unit? How do you convert? Pi radian is? Speed. How do you write? ds by here? Mass. How do you write? Actually m. How do you write here? I. The formula is mr square. Momentum. How do you write? Angular momentum. How do you write? There are 2 formula in fact. R cross P, one formula, and I omega, another formula. Okay. Then there is a quantity force here. How do you write? dP by dt, and that is also ma. And there will be torque. How do you write? dl by dt, and that will also be I alpha. Where what is alpha? It is a counter quantity of A. A is dV by dt here, and alpha is d omega by dt here. Then kinetic energy, say TKE, translational kinetic energy. How do you write? Half mv square. Then RKE, half I omega square. Then impulse. How do you write impulse? Force into time. Impulse ki bhi symbol I hi hota. I is also for the moment of inertia. Impulse is also change in momentum. So how do you write impulse here? Angular impulse. Torque into time. And change in which momentum? Delta L. Change in angular momentum. All right. Then all those equations of motion, V equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square, V square is equal to U square plus twice AS, they get as
three equations here. How? Omega is equal to omega naught plus alpha t. Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square, and omega square is equal to omega naught square plus twice alpha theta. All right. So more or less you are comfortable with this. So we know that there is a dynamics called translational dynamics, where we study the object moving in a straight line. We study the impact of force, momentum, etc. We also now knew that there is another dynamics called rotational dynamics, where the body tends to rotate, and therefore we study the effect of torque, okay, angular momentum, etc. Let's now try to see the problems which either I have not covered that way, or maybe some problems are very new to you. Okay, I will do around 10 problems to begin with today. Sir, इसको जरा और बड़ा करेगा, पूरे स्क्रीन पे पूरा जितना मैक्सिमम मैग्नीफाई कर सकते हैं. There could be three different situations when a rod can be allowed to fall down from a surface. Situation 1, situation 2, situation 3. Try to understand all the three situations. You can note down the question. A rod of mass m and length L is allowed to fall under gravity in following three different modes. Calculate the angular speed of the rod when its center of mass falls to the minimum possible position from the ground. पहली सिचुएशन समझिए. When the surface is smooth and you have just given an impact, it is just a small impact, small enough to allow the rod to fall down. It is not that big impulse which makes the rod to translate as well. So there's a small gentle push you are giving at the top. Now what will happen if surface is smooth? Will it fall like this? Like this pen, okay? If I give a gentle push, Sajara, camera, मैं action में आने वाला हूँ. ठीक है? If I give a gentle push here, everybody can see how it falls. It falls there only. The friction at the point of contact is not allowing the bottom to slide. So as if it is fixed there at the bottom, though it was not. Okay. Remember, if I give impact not at the top, if I keep shifting the point of impact, the chances of the bottom sliding increases. You have to understand this also and tell me that why. Why the same impact, when I give right at the top, then the chances of the rod falling, rotating as if the bottom being fixed is more. Whereas if I give the impact slowly and slowly towards the point where the rod has been kept, the chances of the rod sliding is more. पहले इसका जवाब दोगे. And naturally, everybody knows that if I give the impact right at the bottom, जहां पर रखा हुआ है, then probably there is no chance of rotation. ये वहीं या तो गिर जाएगा या पूरा स्लाइड कर जाएगा. Why it is happening? There is no friction.
Where should I hit the rod so that I can ensure that in this situation where there is no, suppose there is no friction, where should I hit the rod so that I can guarantee that it will never rotate, come what it may. It will only translate. Pakka? Nahi. When you hit at the bottom, then it will rotate otherwise. करके देखना, I do with you, for you. It did otherwise. बीच में बोलना ठीक नहीं होगा, से सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि पेन का कैप और बॉटल सब अलग अलग तरह से बना हुआ है. The center of mass. So when I hit the rod at the center of mass, everybody can be assured, guarantee can be given that come what may, the rod will not rotate. It will only translate. So I repeat, last time ही बताया था मैंने, when the body is not fixed, then the axis of rotation naturally passes from the center of mass. So this is okay to everyone. That is why when the body is not fixed, if you hit the body from the point where the axis is passing, naturally there is no question of rotation. Now you can easily explain that when you hit at the top or at the bottom, why the chances of rotation is more. कौन बताएगा? Because you are away from the center of mass to the maximum possible separation. And then what is increasing? Torque is increasing, R is increasing, so torque is increasing. And what torque does? So be ready for the consequences. So since you are hitting at the maximum possible separation, इसलिए दरवाजे पे जो हैंडल होता है, हमेशा जो कारपेंटर होता है, he always puts the handle at the maximum possible separation from the hinges. बिल्कुल एंड पे तो नहीं लगाता, हैंडल ही हाथ में आ जाएगा आपके, but at maximum possible separation so that R is maximum. ठीक है? Is that okay? Now solve the question. If I keep a rod, suppose on a surface where there is no friction at the bottom, and give a gentle push, how to find the angular speed of the rod when it just touches the ground? Naturally, how it will fall, tell me? Will it fall like this? Yeah, it will fall like this. This end will shift here. It will fall like this only, such that center of mass keeps falling in the same line. Center of mass keeps, लिख लो कहीं, keeps falling under gravity vertically. Why? Because there is no force acting on the rod to shift the center of mass horizontally. There is no friction. And I said that I am not applying the force at the top large in magnitude. It's a very gentle push, just to make this disturb, that's it. So since there's no horizontal force, no question of center of mass shifting horizontally. So the rod will fall such that this end will shift towards right, this towards left, such that the center of mass keeps falling in the vertical direction. Okay, so now when it's just about to touch the ground, what will be the loss of potential energy? What is the loss in potential energy when it's about to touch the ground? Bolo, mg L by 2. ठीक है? Where this energy will go? Which kinetic energy? Rotation. Translate. Rotate कहाँ हो रहा है? Rotate अगर हो रहा है तो how to find the omega? हाँ वही तो कह रहा हूँ, ओमेगा ही तो निकलना है, कैसे निकालोगे ओमेगा? रोटेशन हो कहाँ रहा है? ये रोटेशन हुआ या ये रोटेशन हुआ? ठीक है, एक तो ये हुआ, ये वहीं गिर जाए, ठीक है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका एक्सेस फिक्स है, और एक ये हुआ. So how to find it? This obviously in this case you can find the I, we can find the omega. Center of mass is also rotating. Every point is rotating.
So I think we should write here mgl by 2 is equal to half mvcm square, where vcm is the velocity of the center of mass. Now we can find 2 से 2 cancel हो गया, m से m cancel, vcm is gl root. आप जल्दी से मुझे ये करके बताओ, ट्राई. Suppose there is a friction at the bottom and friction is sufficient enough not to allow the bottom to slide. It's a very rough surface. Then the same rod, if allows to fall, then बताइए क्या होगा? mg l by 2 again. तो लॉस तो उतना ही होगा ना पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि सेंटर ऑफ मास व्हेन वंस द रॉड रीचेस द ग्राउंड, व्हाट इज द लॉस ऑफ द हाइट? So mgl by 2 is the loss of potential energy is equal to half only I omega square. Don't write half mv square here. Why? Because there is a only rotation taking place. There is no translation. अब now you say, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा चल तो रहा है ये, रोटेशन के साथ साथ चल, जैसे पिछली बार लग रहा था आपको कि ये रोटेट भी तो कर रहा है, वैसे यहां भी लगता है कि ये दिस इज नॉट ओनली रोटेटिंग, दिस इज ट्रांसलेटिंग ऑल्सो. But let me tell you, every point has a linear velocity which can easily be associated with the angular velocity by writing v equal to r omega. What will be r? The distance of the point from the bottom. If it is center of mass, then v will be equal to l by 2 into omega. But to be very honest, let us be honest, जो दिख रहा है हमें वो वही हम बताएं. क्या दिख रहा है? Rod is actually doing only rotation about the point fixed at the bottom. So since it is doing only rotation, therefore the energy will be half I omega square. Why should we write half mv square? Okay, and therefore we can find omega. How much? Achha, what is I here? I, come on, tell me. अप्लाई करके बताओ ना, पूरा बताओ. ml square by 12, dare not to say ml square by 12. ml square by 3, because now the axis is from the bottom. So parallel axis theorem से क्या आ जाएगा? ml square by 3. So ml square by 3. इसलिए आंसर क्या आ गया? आंसर इज 3g by l. ठीक है. समझ आ गया? Now third case, the rod actually has been given a hinge at the bottom and it is placed on the hinge such that the hinge can allow the rod to not only rotate for the 90 degree, it can also allow the rod to rotate for a one circle, complete circle. So the hinge is right at the edge of the table. So naturally when the rod falls, it will fall like this. जैसे वो ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर का ट्राली जो पीछे से खुलता है जब रेत वगैरह लेके आते हैं, तो वो खुलने के बाद वो यहां तक ही नहीं आता, नीचे भी जाता है वो, बिकॉज देयर इज अ हिंज. ओके, एंड देन जो माल होता है वो पलट के वो चले जाते हैं. सो आई हैव अ रॉड हियर which has got the hinge right at the bottom and the rod is allowed to fall. You have to tell me the angular velocity when it reaches to the closest position from the ground. मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है, ट्राई करो. Tell me the angular velocity of the rod when it reaches to the closest position from the ground. This is the ground and therefore this is the closest position from the ground.
ट्राई करो. आया किसी का? L/3 क्यों ले रहे हो बेटा? नहीं, √3 तो इसका √3 नहीं है. First try to find out कितनी height. What is the height? L. What is the height it has fallen? L. So what is the loss of potential energy? mgl. That will be gain in which kinetic energy? Only rotation. Half I. What is I? Half I omega square. I think it's 6G by L. 9G क्या बोल रहे थे भाई? So it's a 6G by L. ठीक है? Now, see second question. You can note down the question, and I'll explain you what we have to do here. Find the angular momentum of the system when the mass capital M has descended a height h. The system is, there is a pulley which has got moment of inertia I and radius r. And there are two masses, small m on one side and capital M on the other side. We have to find the total angular momentum of the system when the capital M has gone down by a distance h. In the whole journey, in the whole process, could you find any point which is fixed, which is not moving? Of pulley. So please find the angular momentum about that point. Okay, until and unless it is जबरदस्ती, given for you to choose a point which is moving, please always choose a point which is fixed. अगर आपको choose करना हो अपने मन से, तो choose a point which is fixed, because that will always give you the easiness in calculating the angular momentum. So only one point which you said, which seems to be fixed. So find the angular momentum about this point, say point O. तीनों masses का angular momentum निकालना है. मैं आपको 2-3 मिनट छोड़ रहा हूं, डायग्राम बना लो. If you want to do by FVD बना लो. Ultimately, you have to tell me that how to find the angular momentum of this system.
I'm more interested in finding the method. So if someone can tell me the method, what is the method to find the angular momentum? हम लोग सब मिलके कर लेंगे बाद में, पहले पता तो चले what is the mechanism to find the angular momentum. बोलो. किसका किसका एंगुलर मोमेंटम सोच रहे होगा? सबका होगा? धागे का भी होगा? धागे का नहीं होगा, धागे का मास नहीं दिया हुआ है. तो फिर 3 मास हो गए, पुली एंड स्मॉल एम एंड कैपिटल एम. पुली का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? है ए निकालने अगर तो ए तो निकाल ही लोगे आप लॉज ऑफ मोशन कर रखे हो आप लोग. तो ए से क्या फायदा होगा? आई वांट टू नो कि पुली का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा. अभी बताया था फॉर्मूला क्लास की शुरुआत में, आई ओमेगा. सो पुली का आई, पुली नॉर्मली इज कंसिडर्ड एज ए डिस्क. ठीक है, तो पुली का ओमेगा कैसे निकलेगा? ठीक है, उससे बट कहीं छूट रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है, क्योंकि the total loss of potential energy has converted into many kinetic energy. So if the don't forget that when this has fallen down, this has gone up also. So if there is a loss in potential energy because of one mass, there is a gain of potential energy because of another mass. Now whosoever wins the race, that will be Sikandar. That means the total gain of the potential energy will be the gain minus loss. Okay, I mean total net potential energy change will be equal to the kinetic energy, net kinetic energy. Okay, that will give you an equation where you might get a formula for velocity, angular velocity as well. Okay, so you have to, method is very simple. If you have to find the angular momentum of a pulley, you have to find I omega. Angular momentum, चलो masses का बताओ. Suppose करो इनका मैं आपसे पूछता हूँ, what is the angular momentum of this mass about this point O? If this is going down, this will go up. So what is the angular momentum of this mass which is going up, say with velocity v, about this particular point O? This is going up with velocity v, this is going down with velocity v. इसका angular momentum इस point के about कैसे निकालेंगे? I omega से तो निकलेगा नहीं, R cross P से निकालेंगे, and therefore MVR. ठीक है, and what is R there? ये radius. क्यों? क्योंकि we needed perpendicular distance. So MVR is the angular momentum of this mass. समझ आ गया? Fine. इसका angular momentum कितना होगा? MVR. क्योंकि जिस समय इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी भी v होगी. So इसका मोमेंटम MVR. इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? ठीक है, इज इट ओके? अभी मैंने साइन नहीं लिखा, टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है. सो व्हाट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम? साइन लगाना है, प्लस लगाओ या माइनस? अच्छा एक बात बताओ, सपोज को एक पार्टिकल है, मास m है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है?
एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m है, ये भी वेलोसिटी चल रहा है लेकिन इधर चल रहा है. व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम? mv प्लस mv या mv माइनस mv? सोच के बताना कौन सा सही आंसर है. मैं लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, एंगुलर की नहीं. Why this is true? Why this is not true? So that means even in the dream, we must not forget the direction of the physical quantity, which is a vector. That plays a very significant role. Okay. Yes, we do intend to talk magnitude most of the time. But that does not mean that we are actually neglecting the direction. Most of the time we take the direction into mind for the consideration. So that means this system will have momentum 0 because the two particles, they are actually moving in the opposite direction with the same velocity and same mass. So similarly, when I talk about momentum of these two, they are in opposite direction. So we have to put a minus sign. Which particle will have more momentum? This or this? Bigger one. And therefore, where should the minus sign be put? Because ultimately, the net momentum will be positive. The system is moving. So net momentum cannot be negative. But how much positive, that will be decided by the momentum which is more in magnitude minus the momentum which is less in magnitude. थोड़ा सा ट्विस्ट था कहानी में, ठीक है, फाइन. यहां नो डाउट ये तो आई ओमेगा ही होगा, क्योंकि दिस पुली इज सो इनोसेंट इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, ये उसी का बात मानेगा जो इसे घुमाएगा. समझ में आ रहा है? तो पुली कैसे घूमेगा? ऑब्वियसली इन दोनों में से जो मजबूत होगा, जो तगड़ा होगा, वही कहेगा जैसा वैसा पुली चलेगा. नेचुरली पुली इस समय ऐसे चलेगा क्योंकि ये तगड़ा है. इसका मतलब जो भी नेट मोमेंटम आएगा उसके सपोर्ट में खड़ा रहेगा हमेशा. एंड देयरफॉर माइनस आई ओमेगा कभी नहीं, प्लस आई ओमेगा. कंसेप्ट समझ आ रहा है? सो दिस इज द नेट एंगुलर मोमेंटम. अब आपका मैंने मेथडोलॉजी क्लियर किया है. अभी मेथड बताने के बाद प्रोसेस बचता है करने का. वो आपको वी निकालना होगा और ओमेगा निकालना होगा. और वी और ओमेगा आपस में रिलेटेड कैसे होंगे, कौन बताएगा? वेरी गुड. इसका मतलब किसी ने अगर वी और ओमेगा का रिलेशन मालूम है ये, और फिर वो जो आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे थे मेरे से, इफ यू अप्लाई दैट, चलो मैं लिख देता हूं, आप बताओ कैसे लिखूं. एम जी एच माइनस एम जी एच, ठीक है. दिस इज द टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर. यहां ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर, so we need not to bother about direction. We have to just add them. Kinetic energy is scalar. So this is the total energy they possesses, and this is the total rotational kinetic energy the pulley possesses, is equal to the loss in. So using this equation 1 and 2, you please find V and use V equal to R omega to eliminate omega in terms of V, and then substitute the V to find the net angular momentum. ले लो टाइम, 3-4 मिनट कर लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
आंसर है मेरे पास, मैं आंसर लिखूंगा अभी 2-3 मिनट में, आप ट्राई कर लो तब तक. We are calculating the angular momentum of this whole system. These two masses are moving, and this pulley has moment of inertia I radius r. I told them that angular momentum will be sum of the angular momentum of this and this and this. We have to find the velocity using the this kinetics, laws of motion and all that. In fact, I have used the law of conservation of energy here to find the velocity. V is r omega. This is the total angular momentum minus sign, because this will go up and this will go down. Therefore, the two angular momentum will not be added. इक्वेशंस तो बन गया है, ठीक है. बाकी मैथमेटिकल प्रोसेस जो आप लगे हुए हो ये तो आप कर सकते हो ना. अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 3. एक सिचुएशन ऐसी हमने सोची है जिसमें वो जो कंसेप्ट हम लोगों के दिमाग में फ्रिक्शन का आता है रोलिंग के दौरान, वो वी कैन डिस्कस हियर. अक्सर दिमाग में आता है फ्रिक्शन किधर लगेगा. ये भी मैंने बोल दिया यहाँ पर क्लास में कि फ्रिक्शन का कोई वर्क ही नहीं होता. जब फ्रिक्शन का वर्क नहीं होता तब भी फ्रिक्शन होना चाहिए. बिना फ्रिक्शन के रोलिंग हो नहीं सकता, और फ्रिक्शन होने के बाद फ्रिक्शन वर्क करता नहीं. बड़ी मुसीबत है, ठीक है. अब एक ऐसा सिचुएशन लाया हूं मैं जिसमें फ्रिक्शन है, एंड फ्रिक्शन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल हियर. एंड द सिचुएशन इज देयर इज अ mass m, okay, and the mass m has been applied a force right at the top. कैसे आप अप्लाई करते हो फोर्स? मे बी बाई टाइंग द मास विद द थ्रेड, पुलिंग इट, और मे बी यू आर हैविंग सम चेन, बट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स F. Radius of the mass is R M, and there is a roughness on the contact here, so this particular surface is not smooth, it is rough. We have to now decide in which direction frictional force will act before we attempt the question. Where the friction should act? In the forward, in the backward? Obviously, under the action of this force, this is going to roll like this. So, किधर लो friction? Backward लेना चाहिए या forward? Forward क्यों? So will this friction, if I take in backward, like C says backward, suppose I take the friction backward, will this friction help the rotation?
So do you get this situation in life? Do we get this situation that if I start pulling something, then I magically realize that, oh my God, this is actually rotating more while it is coming closer to me, and I'm out of the world. Ye kya ho raha? Because normally what we feel that once you give a push, then while it is rotating, okay, angular velocity decreases. So probably taking friction in the backward direction is not going to support the reality. Okay, so take the friction in. There could be another logic also. एक तो ये था, हो सकता है कोई रियल लाइफ में कभी कुछ किया ही ना, बोले आपकी आपके आपकी क्लास अटेंड करने के बाद तो हमें पर रियल लाइफ जीनी पड़ेगी, तब जाके क्लास में समझ में आएगा. तो उसको ऐसे समझाया जा सकता है कि देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉटम टू स्लिप व्हेन यू अप्लाई दिस फोर्स. And tendency is actually, the way I'm applying the force, tendency of the bottom is actually to slip backward. Because I'm actually hurried, I'm trying to hurry the system for the rotation. Don't you feel? Because my force F is actually going to hurry the system for the rotation. A lot of torque I'm generating because of the force F applied. And since I'm allowing the system for rotation in a hurried manner, that what is the meaning of that? There is a tendency of, मैंने पिछली क्लास में rolling with slipping समझाया था. If the sphere is hurried into rotation, then naturally, ठीक है? So friction in forward direction. It is not slipping yet. I'm not saying slipping, but tendency of this being hurried for the rotation will allow us to take the static friction in the same way as we explained for the pedaling of the cycle. Okay, so the friction will be in forward direction. इतना सबको समझ में आ गया? चलो ले लिया. Now, equations. Since the rotation is taking place, pure rolling is taking place, body will also move in forward direction. We have to write the equations of translational dynamics as well as rotational dynamics. Come on, tell me. For the translational dynamics, how much is the force taking the body forward? Both. Okay? So friction is helping. So I can say F plus Fr is equal to Ma. Got it? F plus Fr is equal to Ma. What about rotational dynamics? Which force is rotating, helping in the rotation, and which is against the rotation? So what is the net torque? Net torque is equal to how much? Is equal to I alpha. What is I? If it is sphere, 2 by 5, take it as sphere. चलो solve कर लो फिर. Give me the answer. A निकालना है. Solve for A. How A and alpha related? Very good. So A is equal to R alpha will be the third equation. How many variables? 3 variables, 3 equations. Capital F is not a variable here. Capital F के term में आप cancel आ सकता है because that has been given. So Fr is variable, A is variable, alpha is variable. Solve it. Fr, A and alpha also ना. But alpha and A they are related, so तीसरा equation मिल गया. 3 equations, 3 variables. Solve करो और A निकालो. Answer बताओ.
एलिमिनेट करो क्वेश्चंस, आर इधर ले आओ, अल्फा बाय आर हो जाएगा ये। एफ आर हटाओ बेटा, एफ आर हैज टू बी एलिमिनेटेड, हट जाएगा, दोनों इक्वेशंस ऐड कर दो, एफ आर कट जाएगा अपने आप। नेक्स्ट टाइम लेट आना, इस बार टाइम से आए। कितना आया? कितना बोलो? यस, 10f upon, and that is the correct answer. Good. Yeah, there's a sphere, force applied on the sphere, surface is rough, we have to find the acceleration. ये क्वेश्चन चल रहा था। आंसर, ये डायग्राम बना लो, आंसर लिख लो, घर बाद में ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, let us re-examine our concept of rotational equilibrium again. We have done the translational equilibrium. In fact, I have not done, probably you have done. When you're doing center of mass, we talked about a lot of equilibrium of a body, equilibrium of a system of masses, something like that. Let's talk about rotational equilibrium of a very typical system. जब कभी आपके घरों में पेंटिंग का काम होता है, इस तरह की सीढ़ियां आती हैं, जिसमें दोनों तरफ पेंटर सीढ़ियों पे चढ़कर वो पेंटिंग करता है, ठीक है? Let us consider one such system, a ladder, which is actually going to make a triangle if you place on the ground. Let the angle at the edge of the ladder at the top is 60 degree, and the two painters are equally heavy of mass capital M each, and they are actually standing right at the same point from the ground on two different parts. L by 3L by 4 from each bottom. Okay, we have to find the tension in the thread. देखना ध्यान से, इस तरह के लेडर में बीच में रस्सी होती है, obviously होनी भी चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे वो, ठीक है? So you have to find the tension in the thread. Let's address this practical situation, very practical situation. Question is, find the tension in the thread. The length of the ladder is L and the mass of the ladder each segment is small m. Mass of the painter, capital M. Angle at the edge, 60 degree. Do I need to tell you the rotational equilibrium या आता है सभी को? Translational equilibrium में क्या होता है? Net force acting is 0 along x-axis, along y-axis. Similarly, what is the rotational equilibrium? Net torque equal to 0. That means the sum of the clockwise torque is always equal to sum of the anti-clockwise torque. Torque कैसे लोगे? You have to choose a point. जो point choose करोगे वो कहाँ होगा? जहां मर्जी वहां होगा, आपकी मर्जी. But कोशिश करना, take a point which has got the maximum number of force passing through it. Why? Because at least those forces will have no torque about that point. समझ आ रहा सबको? So
किसी एक लैडर का अगर मैं दिखाऊं, if I show one ladder, then these are the forces acting. Normal reaction at the bottom, weight of the ladder, weight of the painter. Fine. If this is 60 degree, how much will be this? It will be 60. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना. ओके, अब आप ट्राई करो. फ्रिक्शन नहीं दिया मैंने, फ्रिक्शन ने मत लो. फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के भी लेडर खड़ा हो सकता है. वो क्या होगा? एक्शन ना, मैन का तो वेट होगा सिर्फ ओनली, दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. लैडर पे उसने जो एक्शन रिएक्शन किया वो सब लैडर के बॉटम में आके कन्वर्ट होके नॉर्मल रिएक्शन कुल मिलाकर पैदा हो गया. हाँ, वो सभी का, वो सबका अकाउंटेबल है. वो अलग से मत दिखाओ कि मैन ने लैडर को किया तो लैडर के उस पॉइंट पे जहां पर मैन खड़ा हुआ है देयर मस्ट बी सम एक्शन रिएक्शन. नहीं, जो कुछ भी रिजल्ट है वो हम बॉटम पे दिखा रहे हैं और एज पे होगा वो हमें दिखाना ही नहीं है, क्योंकि जितना इधर से एज पे आएगा उतना इधर से आएगा. किसके कंपोनेंट? टेंशन को रिजॉल्व कर रहे हो, उसकी जरूरत है. कोई भी काम हम तभी करें जब जरूरत हो तो हमारे लिए अच्छा होगा. ठीक है, यहां टेंशन को रिजॉल्व करने की आवश्यकता है. कुछ फोर्सेज ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहे हैं, उनको रिजॉल्व करके हम अपने को क्यों अननेसेसरीली मुसीबत में डालें? टेंशन इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, तो उसकी जरूरत क्या है रिजॉल्व करने की? अब आप ये कह सकते हो, आई डोंट नो हाउ, आप में से कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है कि ये वाला हिस्सा अपने आप में बैलेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग एक्सेप्ट टेंशन. सो टेंशन को बैलेंस कौन करेगा? हैड इट बीन फ्रिक्शन तो क्या पता यहां पर फ्रिक्शन उधर लगता और ये बैलेंस हो जाता, बट फ्रिक्शन इज नॉट देयर. बट आई थिंक आई हैव सीन, ऐसे लेडर देखा है ना, हाथ उठाओ जितने लोगों ने देखा होगा. बैलेंस तो होता है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बैलेंस तो होता है. इसका मतलब एक सिंगल हिस्सा अपने बैलेंस को तरस रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन नहीं है. तो दोनों को कंबाइंड सिस्टम की तरह लोगे तो बैलेंस होगा. ये सोचो, अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करता तो विल देयर बी एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग? पूरे सिस्टम की बात करो, विल देयर बी एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग? नो. एंड देयरफॉर द नो क्वेश्चन ऑफ लैडर शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टली. वही तो नहीं चाहिए हमें, फ्रिक्शन हो या ना हो. और है भी ये सिस्टम पूरा
एक साथ अकेले कभी ऐसे लड़े रख के दिखाओ, फ्रिक्शन के बिना गिर जाएगा। सो टेंशन मत लो, मतलब टेंशन मतलब इसके बैलेंस की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट इज बैलेंस्ड। वर्टिकल फोर्सेज आर टू बी बैलेंस्ड, वो तो दिख ही रहा है तुम्हें, तो करो बैलेंस, वर्टिकल फोर्सेज बैलेंस करो। एन, अब आप कहोगे इसका भी डायग्राम बना के लेता तो 2n लेता, 2n इज इक्वल टू क्या होता फिर, बोलो। 2n इज इक्वल टू 2 इंटू mg प्लस mg, 2 से 2 कैंसिल, n इज इक्वल टू m प्लस m इंटू g, इक्वेशन 1। हॉरिजॉन्टल मैंने बता ही दिया कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बैलेंस है। टेंशन अब निकालना है आपको। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड टेंशन, क्योंकि पूरे सिस्टम का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में टेंशन तो कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए आपको अब टॉर्क लेना होगा। एक पॉइंट चूज करो अपनी मर्जी के मुताबिक, और प्लीज वह पॉइंट मत लेना जिस पॉइंट पे टेंशन एक्ट कर रहा है, अदरवाइज टेंशन का टॉर्क वहां भी जीरो हो जाएगा, टेंशन आएगा कहां से। So choose a point about which you have to find the torque, and then all the clockwise torque must be equal to the anti-clockwise torque. कौन सा पॉइंट लूं? मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। विच पॉइंट आई शुड टेक, या पॉइंट डी ले लो चलो, अबाउट विच आई वांट टू फाइंड द टॉर्क। अच्छा, how many of you are in the mind that choice of the point will alter the result? अब मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसका मतलब ए, इसने ए लिया अबाउट ए, इसने बी लिया, इसने डी लिया, तो ऐसा तो नहीं तीनों के अलग अलग आंसर आएंगे, नहीं आना चाहिए। चॉइस ऑफ द पॉइंट विल नॉट अल्टर द रिजल्ट बिकॉज द सिस्टम इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो विच एवर पॉइंट यू चूज, द बॉडी इज गोइंग टू हैव अ नेट टॉर्क ऑलवेज जीरो। दैट इज ओके, फाइन। सो योर चॉइस, except B, any point you can choose. If I take C, then take D. You know why? Because I am having little doubtful at D. What is happening at the D? क्या हो रहा है D पे? आप भी सोचो, D पे कुछ तो हो रहा होगा। How can these 2 points come in contact without action reaction? And if this ladder is pressing the other one is equally pressing the first one, and there will be action reaction. Now hinges and these kind of contacts, they have very abnormal reactions. You never know that in which direction the reaction will pass. It always goes as per the demand, as per the situation. Similarly, hinge reaction. Okay, so if I take this point, probably that apprehension which is there in my mind about what this ladder is doing to the other ladder, that goes off. Why? Because whatever they are up to for the other part, the net torque of those action reaction pair will always be zero. I'm just giving you an escape process. Okay, if you have to show it, probably you are going to complete, then probably what this girl was doing, if I say कि इसका reaction इस तरफ है at angle theta, then I have to resolve this into 2 components. मुसीबत, ठीक है, इसका भी हमें लेना होगा फिर, फाइन, मैं नहीं लेना चाहता। अब आप कहोगे जब मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये लिखा था तो इनकी बात क्यों नहीं की, क्योंकि एवरी टाइम देयर इज एक्शन देयर विल बी रिएक्शन। सो इन एज अ सिस्टम इंटरनल फोर्सेस दे ऑलवेज डू नॉट टेक एनी पार्ट फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दैट इज व्हाई वी से दैट ड्यूरिंग द कोलिजन द नेट फोर्स एक्टिंग इन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। व्हाटएवर x डज टू y, y डज टू x, रिवर्टेड बैक। ठीक है, सो अगर इसके बाद टॉर्क लोगे तो बताओ क्या होगा, अब कौन बताएगा? टेल मी अबाउट डी, टॉर्क निकालना है, ऑल द फोर्सेस आर टॉर्क, एक एक करके बताओ, सेंस भी बता जाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। टेल मी फर्स्ट अबाउट एन, एन का टॉर्क, टॉर्क ऑफ एन अबाउट डी, वैल्यू एज वेल एज सेंस।
बोलो, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो कितना होगा डिस्टेंस, यही होगा. ठीक है, ये L है, ये 30 डिग्री होगा. So this will be L cos 30 degree. So N into L cos 30 degree. बताओ sense clockwise or anti-clockwise? Very good. So this is clockwise. What about capital MG? Capital MG and small mg दोनों का torque about D. Clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. नहीं आ रहा समझ में. If I pull this down, this pen, then this pen will rotate naturally like this. Is it clockwise or anti-clockwise? So say anti-clockwise ना. So you have to feel that कि किस तरह से rotation होगा. So एक और clockwise. What about tension? Tension का torque about D. Clockwise or anti-clockwise? Again try ना. पुल करो इसे, टेंशन को, इसको पेन को पुल करो इस तरफ जैसा टेंशन लग रहा है. सो एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड कर लिया करो उधर ही पहुंच के. ठीक है. सो वी हैव गॉट स्मॉल mg, कैपिटल mg, t, all of them are generating a torque which is anti-clockwise. So sum of those torque will be equal to the torque due to n. So this will be equal to, अब फटाफट बताओ टेंशन का टॉर्क क्या होगा. टेंशन इनटू this distance. How much is this distance? मिडिल पॉइंट से है ये L/2 होगा. ये कितना होगा, ये 60 डिग्री है. L/2 sin 60. ठीक है. स्मॉल mg का टॉर्क, ये डिस्टेंस चाहिए हमें, L/2 cos 30 डिग्री. So plus mg into L/2 cos 30 डिग्री. What about कैपिटल mg का टॉर्क, ये डिस्टेंस चाहिए, ये 3L/4 है, तो बचा कितना, L/4. L में से 3L/4 निकल गया, ये L/4 है, तो ये कितना होगा, L/4 cos 30 डिग्री. सॉल्व कर लो. ये वाला टॉर्क, ये पूरा टॉर्क, ये सारा टॉर्क इस तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, एंड देयरफॉर प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ t. इक्वेशन 1 से n निकाल कर इक्वेशन 2 में डाल देना, you'll get the value of t. That's very good question. Online, Avdesh Kumar Pandey, that ladder is touching the ground tangentially, then why we are taking the normal reaction vertically? Very good point. I want first you all to just focus this, then I will tell you the answer. ऐसा लग रहा होगा कि सपोज मैं इस पेन को ऐसे रखता हूं, ऐसे, ठीक है, और ऐसे, तो हमें लगता है दोनों में फर्क है. हम लोगों को लगता है नॉर्मली कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन द एज ऑफ द पेन इज टचिंग द ग्राउंड एंड व्हेन द होल पेन इज टचिंग द ग्राउंड. But it's not, there's hardly any difference. There's a difference of the number of points, number of molecules in contact, that's it. As far as the normal reaction is concerned, that will still be normal to the surface. Normal reaction actually does not depend upon how much molecules are in touch. That is why we call normal reaction. It is always normal to the surface. Where you are having a fewer contact of the molecules or the bigger contact of the molecules. Doesn't matter. एक सुई भी अगर आप रखोगे, सुई, तो सुई का तो पिन एज बहुत कम होता है, तब भी नॉर्मल रिएक्शन जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा. और उस सुई को पलट दो
क्योंकि सुई का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा चपटा होता है, ठीक है। अब अगर रखोगे तब भी नॉर्मल रिएक्शन भी नॉर्मल सरफेस के ऊपर ही हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहे, देते रहना। सो आगे आंसर बताओ, शुड आई टेल यू द आंसर? आया किसी का? आ गया? निकालो, सॉल्व करो। एल से देखो, एल कैंसिल हो रहा है ना बेटा, एल कैंसिल हो रहा है, एल इधर तीनों एल है, इधर उधर एन कहाँ गया? हाँ वो तो ये है, एन है, वही टीबी वही आ रहा। अच्छा, आई एम सरप्राइज्ड, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। एल से एल कैंसिल हो गया ना? What is sine 30? What is sine 60? And cos 30? So n root 3 by 2 is equal to sine 60 is root 3 by 2. So t root 3 by 4 plus cos 30 is also root 3 by 2. mg root 3 by 4 plus mg root 3 by 4. Root 3 cancel. है? तो क्या है फिर? So we get n की वैल्यू डालो, m plus m into g. So m plus m into g by 2 is equal to t by 4 plus mg plus mg by 4. g cancel, नहीं cancel नहीं होगा, sorry, क्योंकि I can take common. So what is t by 4 coming out to be? m plus m g by 2, g by 4 निकाला तो m plus m g by 4, ठीक है। 4 आ तो रहा है, टी वही आ रहा है, आ तो रहा है, आप चेक कर लो। When this goes there, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में। So this is m plus mg by 4, that is m plus mg by 2. So when you subtract, obviously we'll get m plus mg by 4. That is equal to t by 4. कहाँ बेटा? अच्छा, तो बताना था ना फिर। mg root 3 by 8 होना चाहिए था, and then probably then I can't write this, then it would be m plus m by 2 into g by 4. अब ठीक है, ठीक है, तो इसे रेक्टिफाई कर लो। अब फाइनली क्या आ जाएगा ये? I can say t by 4 is equal to m plus m g by 2 minus m plus m by 2 g by 4. Solve कर लो, ठीक है। Is it okay? You can solve it. Next question. आपने चूंकि अभी अभी किया है इक्विलिब्रियम, इसलिए सर ऊपर करिएगा। एक दूसरा इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है,
सॉल्व कोई नहीं करेगा, सिर्फ इक्वेशंस बनाकर और मेथड बता के आगे बढ़ जाएंगे। सर ऊपर जाना और ऊपर, ये क्वेश्चन दिखाओ, ये वाला। आ जाओ नीचे, नहीं आ रहा है? अच्छा, मैं बना देता हूं डायग्राम। वो कैसे हो गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आई विल मेक द डायग्राम। Try to make the free body diagram and discuss the equilibrium of this system. In fact, question is find the coefficient of friction at the bottom. The body is in equilibrium. This is H and this is theta. These are given. And this is L given. Find the value of mu. ये कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसके ऊपर रखा हुआ है ये, ठीक है। टेल मी द फोर्सेस। इधर N1, यहां ऐसे लूं या ऐसे, N2, weight, friction, right word or left word? Right ना, क्योंकि the ladder will slip in leftward direction. It will slip in case if it slips. If it is not slipping, still the friction will be rightward. Then the friction will be obviously static friction. So Fr, which will be what? Mu times which normal? N1. Solve कर लोगे? अब यहां पर मुझे अभी याद है जो आप कर रही थी, अब यहां पर इस नॉर्मल रिएक्शन N2 को रिजॉल्व करने की बारी आ गई, क्योंकि ये खड़ा खड़ा अकेले वहां कुछ नहीं कर रहा है। इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैटेगरी में डालना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आई हैव टू डील अबाउट द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, आई हैव टू से द नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस is 0. Net force acting along y axis is 0. So N N2 को रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे करोगे बताओ? ये एंगल कितना होगा? ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो गया? N2 साइन थीटा, और ये N2 कॉस थीटा। ठीक है? Is it okay? So for translational equilibrium, इक्वेशन बताओ फटाफट, बोलो। N1 प्लस N2 cos थीटा इज इक्वल टू, अच्छा पक्का, इक्वेशन 1, ठीक है। What about this is for x axis, this was for y axis, and what about x axis forces? N2 sin theta mu times N1. How many variables? At least अभी तक तो N1 N2 थीटा गिवन है, म्यू N1 N2 म्यू, 3 वेरिएबल्स, म्यू तो निकालना है, तो 2 इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें जरूरत होती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। मर्जी आपकी, कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो, किसी एक पॉइंट के बाद टॉक बताओ। चूंकि मैं म्यू में इक्वेशन चाहिए, इसलिए इसके बाद टॉक मत ले लेना, ठीक है।
या फिर लेना चाहो ले लो, क्योंकि म्यू कहीं तो म्यू मिलेगा ही, आपकी मर्जी, आप किसी के अबाउट ले लो। आई थिंक इतना पर्टिकुलर होने की जरूरत नहीं है। इसके अबाउट लेना चाहते हो तो इसका डॉग खत्म हो जाएगा N2 का, तो इसके रिजॉल्व पार्ट को ही भूल जाना। फिर इसके बाद किसका किसका डॉग होगा? FG का। बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अब तो बता दो। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी भी क्लॉक बोल रहे हो। N1 का टॉक इसके अबाउट, ठीक है। फ्रिक्शन का टॉक एंटी क्लॉकवाइज। सो सम ऑफ द टॉक एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉक। तीसरा इक्वेशन बन गया। सॉल्व कर लोगे? आंसर नोट कर लो। L cos theta sin square theta upon 2h minus L cos square sin theta. ये कर लेना, बहुत आसान आंसर है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर चले जाइए। अगला सवाल बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, इसलिए हम समझते हैं सारे बच्चे आंसर दे देंगे इसका। बच्चे नहीं, ये नहीं, ये तो आंसर्स हैं। एक देयर इज अ मैन, जब तक ये ओपन करेंगे तब तक मैं आपको बता रहा हूं। देयर इज अ मैन हु इज पुलिंग अ सिलेंडर बाय मींस ऑफ अ थ्रेड। हाँ, उसी पेज पे जाओ सर। He is pulling a cylinder by tying the cylinder with a thread. Okay, rolling the cylinder, and by doing that, he is releasing the thread from his hand. आपको बताना है जब उसके पास पहुंच जाएगा सिलेंडर, उसके हाथ से कितनी थ्रेड खाली होगी। थोड़ा सोच के बताना, बच्चों वाला क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है। He is pulling the thread and cylinder is coming closer. By the time cylinder reaches to him, how much thread has gone down by his hand? Please think and then let me know the answer. ऐसे मत बोलो, इतना आसान लेके आऊंगा क्वेश्चन में क्या आपके लिए? एल था, एल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दिया नहीं, तुम्हें कैसे पता कितना रोटेशन लेगा? बट ये कैसे पता लगा कितना रोटेशन लेगा? ये तो हम, हाँ जादूगर थोड़ी हम लोग, आम इंसान है। इतनी पढ़ाई कर ली रोटेशनल मोशन में, अब इस क्वेश्चन में अटकने का क्या मतलब होता है? ना तो एंगुलर मोमेंटम, ना टॉर्क, ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी काम नहीं आ रहा है। सोचो सोचो सोचो। नहीं, यूज योर ब्रेन। आई एम श्योर दैट वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू, इफ यू यूज देम you'll get the answer. Yes. Calculate the length of the string passes through the hands of the man when cylinder reaches him. Okay.
0। अरे नहीं, रोल नहीं करना है ना ऐसा। कोई उनका गोला थोड़ी है कि वो खोल रहे लपेट रहे स्वेटर बनाना, नहीं, वो ऐसे ढीला करता जा रहा है, मतलब छोड़ता जा रहा है। ये आपने देखा नहीं होगा ऐसे कभी रस्सी जब हम लोग खींचते हैं तो जो रस्सी खींच लेते हैं उसकी परवाह थोड़ी करते हैं। उसकी परवाह करोगे तब तो पूरा लपेटना ही होगा, कहीं लपेटते रहो, फिर उसको तो मैं छोड़ते रहना, तब तो आगे खींच पाओगे। L minus? No, beta. That is not the answer. No, that is also not the answer. L minus? No. L minus R is also not the answer. Don't have a wild guess. Come on, I'm talking about the girls whom I... Huh? मैं भी यही सोचता था। कुछ डिपेंड नहीं करता, कहीं भी कुछ डिपेंड नहीं करता ना। आंसर बताऊं फिर सोचोगे, या चलो एक दूसरा ऑप्शन देता हूं। सपोज करो ये जो धागा है ये यहां ना बंधा होता, सपोज ये बीच में यहां कहीं बंधा होता, तब क्या होता? ये बजाय यहां थ्रेड लगा के खींचने के, अगर मैं यहां लगा के खींचता तो तब वेल होता, तब पक्का है ना, तब रोटेट नहीं होता वो, तब वो रोटेट नहीं होता, क्योंकि जहां से बीच से बांध के खींचोगी तो नेचुरली ये रोटेट कैसे होगा? सेंटर से खींच रहे हो तो ये सीधे सीधे आ जाता, तब आंसर एल होता। तो इतना तो सब मानते हैं एल आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। चलो फिर आंसर क्या है? अरे नहीं, कितना रोटेशन करेगा वो कैसे निकालेगी? क्योंकि वो तो दैट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट टू फाइंड, because you hardly know the size and everything, rotational angular velocity and all that. I think I must give the answer and then get some logic behind the answer. आप में से कोई logic बताया मुझे। Answer is 2L. अरे यही तो सोचना है, तो फिजिक्स है। हेड की लेंथ L है, बट उसके हाथ से 2L लेंथ नीचे चली जाएगी। यही तो फिजिक्स है बेटा, ये तो सोचना है। सोचो सोचो। हाँ, वैसे आप लोग इसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सही बोल रही है वो बात, और थोड़ा दबे दबे आवाज में बोल रही है, पता नहीं डर किससे रही है, बट आई थिंक शी इज स्पीकिंग राइट कि जब वो खींचेगा तो वो जो धागा दिख रहा है वो धागा तो उसके हाथ से जाएगा, या कुछ धागा आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो लपेटा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा? समझ रहे आपको जो समझा रहा हूं? कुछ धागा लपेटा हुआ है बट दिखाई नहीं दे रहा है। नेचुरली वो दिखेगा कब? जब लपेटा हुआ धागा खुलेगा। पतंग तो उड़ाते हो ना, तो जब नाउ व्हेन दिस wrapped thread will open, naturally it is going to rotate. I don't know how many number of time it has rotated, I don't know, neither you need to know. What we need to know here is that at the end of the day, when it reaches to the man, while unwinding, the unwinding length is also going to be L only, तभी तो पहुंचेगा वो। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर? सरकमफरेंस के ऊपर एंड ऑल दैट। रोल करता बताया, रोल करता हुआ जा रहा।
अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, नहीं एक मिनट मैं इनको नहीं रुक जा, आई विल आंसर यू नो सी इन द सेम लैंग्वेज वेयर सी आस्क्ड द क्वेश्चन. टेल मी वन थिंग, if I believe what this girl saying, if I tie the thread from the top and pull it, sooner or later don't you feel that this point will come here? करके दिखाओ, तुम कभी कोशिश करो, जब आप खींचोगे ऊपर से तो वो रोल करके ऐसा होगा कि तुरंत वो until and unless that comes passing from the center of mass तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता वो. अगर तुम only one way is there, when it rotates then only the topmost point will remain at the topmost point. अगर आप ऊपर बांध कर खींचोगे तो ऐसे लुढ़केगा और वो सेंटर पे आ जाएगा, तब जाके स्लाइड करेगा. अच्छा तो L प्लस, अच्छा L प्लस आपने पाई आर बाई 4 बताया था, L प्लस पाई आर बाई 4. ओके, ओमा घोष या सोमा घोष, क्या इट वाज, एक बार ओमा आ रहा था, एक बार सोमा. अच्छा, 3 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, आई विल डू. ये समझ आ गया? देयर इज अनदर लॉजिक बिहाइंड इट. लेट्स देयर इज नो हार्म. अच्छा, तुम्हारा मतलब ये कि वो एल ही क्यों खुलेगा? एक मिनट. आपने कालीन देखी है बिछाते हुए? ठीक है, आजकल ठंड का समय, गद्दे रजाई भी फोल्ड करके रखते हैं मम्मी को. उसके बाद सपोज करो मुझे एक बेड पे बिछाना है, गद्दा बिछाना है, ठीक है, फोल्ड करके रखा हुआ था. इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जब तेरा गद्दा बेड पे बिछ जाएगा तो पूरा बेड कवर कर लेगा. तो जब लपेटा हुआ गद्दा था तो उसका सरकमफरेंस जो होगा वो पूरे लेंथ के बराबर ही होगा ना. तो अगर ये अनफोल्ड होके आप तक जा रहा है तो कितनी बार टर्न किया छोड़ो, लेकिन जो कुछ भी बिछेगा लाइन से, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो तुम्हें फ्लैट दिखेगा बाद में, वो तो एल ही होगा ना. कितनी बार किया ये डिपेंड करता है उसका सरकमफरेंस पे. उसकी चर्चा ही मत करो, मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूं. ठीक है, अब एक दूसरा लॉजिक पे आते हैं. दूसरा लॉजिक, एक क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके. उस दिन देखो आपको वो जो वहां से आए थे ग्रुप 30 से, बता रहे थे आपको कि मोर देन वन मेथड आपको हमेशा सोचना चाहिए. एक दूसरा मेथड, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट व्हेन इट इज रोटेटिंग? say VCM. What is the linear velocity of this point? So obviously if this is 2 VCM, then naturally distance is also going to be twice. So it is L plus L, 2L. Time will be same. ठीक है, speed into time is equal to length. And one case it was VCM into T, other case is 2 VCM. That means अगर ये लॉजिक समझ में आ गया, कल को आप अगर कोई ग्रूल हो, जैसे पतंग उड़ाने का जो वो होता है, what you call that, मांझा नहीं, मांझा धागे को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिसमें सिलेंडर ही होता है, उसमें ध्यान से देखो पूल टाइप का होता है उसमें. सो दिस डज नॉट हैव, if the outer surface has the periphery say of capital radius r, that does not mean that thread is also has the circumference r. That means अगर किसी सिचुएशन में, ठीक है, रोल करने वाले ऑब्जेक्ट का रेडियस कैपिटल आर दिया है, लेकिन जहां से धागा रोल कर रहा है अगर वो कुछ और दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो, क्योंकि आपको उसकी वेलोसिटी वीसीएम के टर्म में निकालनी होगी. दैट्स इट, फिर लेंथ निकल आएगा. क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की 2 VCM होती है, हर पॉइंट की 2 VCM नहीं होती, बॉटम की बिल्कुल 0 होती है. ठीक है, तो इस लॉजिक से ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर मुझे पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट से आई एम पुलिंग इट, ओके, एंड देन आई कैन फाइंड द लीनियर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी VCM, एंड देन आई फाइंड द लेंथ व्हिच गेट अनफोल्डेड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नीचे से खींचोगी तो वो लुढ़क कर फिर से ऐसा हो जाएगा कि वो सेंटर, क्योंकि it will not allow you to pull it successfully because the force which apply generate the tension, and tension must pass from the center of mass. ठीक है, fine. Question 3 दिखाना, calculate the acceleration of mass m
इन द अबव डायग्राम। ये तो हम लोगों ने कर लिया था, दोबारा करना है। चलो अगर if they ask again then I will do it. Next question children. Next question sir. Next page. Question number 8. इसी में है, इसी में है, इसी पेज पे है। एक क्वेश्चन नंबर 8 है which probably since this time I have taken the image might have not come properly. क्वेश्चन वो ये है क्वेश्चन, आप ट्राई करो सब लोग इस क्वेश्चन को। I have given in your 5 question slot as well. How to find the acceleration of this mass A? Find the acceleration of this mass A. Radius of this mass is given R. Okay, one of the pulley is light. This pulley is light. ये आपको उसमें भी था। We will not solve the whole question. Quickly, if you help me to find the equations, then I'll move on. Translational motion as well as rotational motion. Diagram बना लिया? Tell me. Translational dynamics. पहले forces दिखाओ. Tension. T1. 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 हैं? T2, because the pulley has moment of inertia. So, बताओ, for this, TD for M, follow, mg, follow यार, mg minus T1 minus T2 is equal to M, शाबाश, ठीक है? By constant relation, this will have acceleration a by 2 if this will have acceleration a. ठीक है? Is it okay? इसका बताओ, for small m, T1 is equal to ma, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है? रोटेशनल डायनेमिक्स बिल लिखो, rotational dynamics. Which tension will have more torque, T1 or T2? Which tension will dominate? T2, because the way it is going to rotate, okay? Since it is coming down, this is the only way it will rotate. ऐसे rotation होगा, ठीक है? And therefore, T2 minus T1 R is equal to I alpha. What is alpha? ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं, जो इस बच्ची ने बोला उसमें गलती हो गई एक छोटी सी, उसकी वजह से बाद में कहोगी कि सर मेरा आंसर बस आते आते रह गया. So please don't write A by R, write A by 2R. Why? Because my acceleration will be the acceleration of the system and A happens to be the acceleration of the block. Right now rotational dynamics जो एड्रेस कर रहा हूं मैं किसके लिए कर रहा हूं? पुली के लिए कर रहा हूं. तो पुली का ए लोगे ना, पुली का अल्फा तो पुली के ए से रिलेट होगा ना. ना बेटा, अगर मैं लीनियर इस इक्वेशन की जब मैं बात करता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यू नो व्हाट, आई एम ट्राइंग टू एड्रेस द लीनियर मोशन and the angular motion of the same system. Okay, similarly A equal to R alpha, angular acceleration and linear acceleration of the same system, same body. Fine. So इसका linear acceleration क्या है? A by 2. So write alpha as A by 2 divided by R. एक R यहां से आ गया, कितना हो गया? A by 2 R square. Solve कर लोगे? ठीक है? Fine. Question number 9. इसको यहीं छोड़ दो, leave it here. इसका आंसर हाँ बिल्कुल पता है, बता दूं. इसका आंसर है 4mg अपॉन 8m प्लस 3m. 4mg अपॉन 8m प्लस 3m. आप लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे हो?
मुझे मुझे पता चल गया, अच्छा इसीलिए पूछा, इसका आंसर पता है आपको, ठीक है। अब तक जितने क्वेश्चन थे किसी का भी आंसर नहीं पूछा, इतने प्यार से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा किसी बच्चे ने। If this thing is same, then how tension can be different? Avdesh Kumar Pandey sir, tension will be different because the pulley has mass, and since the pulley has mass, consequently it is going to rotate, and if we take the tension same, probably rotational motion will not be possible because the torque will be missing, and in order to have the rotational motion we need to take the tension different across the pulley, and one tension will be more than the other one, then only rotation is possible. Is that na? I hope I have made it clear. Next question, children. It's a wonderful question. It has been asked in IIT JEE 2005 or some other year, I don't know exactly, but the question is very good. There's a cylinder which is falling down a table, and we have to find these quantities. Cylinder is actually kept on a rough surface, rolling, and then suddenly falling down a table. Across the edge, the whole situation is confined here. Edge, table cage. So we have to just calculate these things. Find the angle theta through which the cylinder rotates before it leaves the contact with the edge. Speed of the center of mass of the cylinder before leaving the contact. The ratio of the TKE plus RKE, TKE and RKE of the cylinder when the center of mass of the cylinder is parallel to the edge horizontally. करते हैं, ठीक है? Maybe MCQ लेवल पे ये दो तीन क्वेश्चन बन सकता है, बट एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरा ये क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं. चलो. अब नोट कर लिया ना, ये रब कर दूं. क्वेश्चन नंबर 80 है ये. इसके पहले वाला क्वेश्चन 7 था. ओके चिल्ड्रन. दो सिलेंडर बनाओ, ठीक है. ट्राई टू मेक टू डिफरेंट पोजीशंस. वन व्हेन द radius was vertical and other when the radius has rotated angle theta. ठीक है. So this was the case when the radius was vertical and this is when it has rotated angle theta. There's no doubt the normal reaction will pass perpendicular to the edge and this will pass from the center of the cylinder. Weight ठीक है. लुढ़कता एक था जब बिल्कुल एज पे था, एक पोजीशन है जब बिल्कुल लुढ़क रहा है. अभी कांटेक्ट छोड़ा नहीं है. कांटेक्ट छोड़ेगा जब मैं n0 कर दूंगा, तो आपको ही पता है. तो अब जरा इक्वेशन लिखने की कोशिश करिए. आइए
Try to write equations. सिलेंडर लिखा है तो क्या लोगे, हॉलो या सॉलिड? सॉलिड. So if I write equation, mg को resolve करो. If this is theta, even this will be theta. So this will be mg sin theta. This would be mg. So circular motion, mg cos theta minus n m square by r. ठीक है? Got it? No confusion? If the cylinder leaves the contact, then put it n0. ठीक है? Now children, when it is falling down, there must be some conservation principles which will help us. Most of the time, whenever the system is doing such kind of journey, we always go for the conservation principle, whether it's a law of conservation of momentum, law of conservation of linear momentum, angular momentum, or conservation of energy. ठीक है? Let's try to address here with the conservation of energy, because that will help to find v square. क्योंकि हमें पता है कि conservation of energy v square आ जाता है directly. तो और किसी लफड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है तो क्या हुआ? लेट्स अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डायरेक्टली. बट उसके लिए एक पंगा है. एनर्जी कहां से खर्च हो रही है, कहां गेन जा कहां रही है, क्लियर है. स्फीयर इज रोटेटिंग एज वेल एज फॉलिंग डाउन, सो इट हैज अ ट्रांसलेशनल एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल एनर्जी. बट फ्रॉम वेयर द एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, उसके लिए H चाहिए. बताओ H कितना लूं? इस पोजीशन से इस पोजीशन पे, स्ट्रेट लाइन से डॉटेड लाइन आने में कितनी हाइट फॉल किया? कितना, कौन बताएगा? इतना किया होगा ना? सर कैम थोड़ा फोकस करिएगा यहाँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा लिखने जा रहा हूं. ये होगा H. ठीक है? क्योंकि पहले सेंटर ये था A पे, अब सेंटर B पे है, तो हाइट तो H हुआ ना. H होगा क्या वैसे? R माइनस R कॉस थीटा. थोड़ा बड़ा बना दूं तो ये हुआ. ये R cos थीटा हो गया ना, और ये क्या है टोटल? ठीक है, समझ आ गया? इसका मतलब व्हाट इज द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I omega square, because it's a rotating, it's a rolling. So rolling always have translation and rotation. इसको please confuse मत करना. First जो question मैंने आज किया था, that was not at all rolling. That was a rod falling, and therefore I took only rotational kinetic energy. Rod was falling. ठीक है? No translation energy there. Okay, children. Since it is a cylinder, so what is I? सॉलिड सिलेंडर का ही एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर है ना? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ना ये है, ये इसके अबाउट है, सेंटर के अबाउट. रोटेशन तो उसी के अबाउट हो रहा है ना बेटा.
ठीक है. So if I say half mv square plus half I is mr square by 2 and omega square is v square by r square cancel. m ठीक है. So this is gr 1 minus cos theta is equal to how much? V square by 2 plus V square by 4. That is 3V square by 4. Fine. V square की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 में डाल दो. और प्लीज टेल मी दैट how is the theta coming now? Substitute the value of V square from equation 1 to equation 2. बोलो बच्चों कितना आ गया? Cos theta is 4 by 7. So theta will be exactly. This is the answer of part A. Cos inverse 4 by 7. At this angle, the cylinder will leave the contact from the edge. अगला part try करो. Speed of the center of mass of the cylinder before leaving the contact. तो आ जाएगा क्योंकि आप यहां पर v स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू डालनी सिर्फ. ये तो आ गया. सेकेंड पार्ट तो ऐसे है बच्चों वाला हो गया. थर्ड पार्ट फोकस ऑन पार्ट 3. ये कैसे निकलेगा? So second part is very easy. V square is equal to gr cos theta 4 by 7 and therefore V is equal to 4 gr by 7. I want all of you to focus on third part therefore. How to find the ratio of pke and rke. Translational kinetic energy and rotational kinetic energy when the cylinder becomes flat enough so that the radius is parallel to the edge. There's a hint given in this segment itself कि आप approach कैसे करोगे. When the radius becomes flat, then it's very easy for us to consider that how much is the loss in the potential energy. But that loss of potential energy is going to be converted judicially into the two kinetic energy, rotational and initially. When I say judicially, I mean here that please don't do that satik and sapat kind of division that kinetic energy plus rotational energy जो हम लोग करते हैं normally. Be careful क्योंकि हो सकता है एज छोड़ने के बाद रोटेशन को चेंज करने वाला फोर्स मिसिंग हो. ठीक है. रोटेशन को जब तक तुम सपोर्ट नहीं करते रहोगे तब तक रोटेशन होता नहीं है. रोटेशन को सपोर्ट करने वाला फोर्स हमेशा चाहिए होता है. या तो डिक्रीज करो ओमेगा या इंक्रीज करो, कुछ ना कुछ करो. ठीक है. और अंडर ग्रेविटी जब भी कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है या फॉल करती है, एक चीज तो गारंटेड है कि वो जो वेट है वो हमेशा कहां से एक्ट करता है? सेंटर ऑफ मास से. एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वहीं से पास कर रहा है. इसका तो वेट का रोटेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. इसीलिए जब कोई चीज जैसे हम गिराते हैं वैसे गिरती है. ऐसे टेढ़ा करके कोई रॉड गिरा दो टेढ़ा ही गिरेगी. जब तक टकराएगी नहीं तब तक घूमेगी नहीं. ठीक है. इसका तो जितना भी घूमना था, इसका जितना भी स्यापा था घूमने का, दैट हैज बीन टेकन प्लेस ओनली टिल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाज विद द एज. The moment it leaves the contact, whatever is the rotational kinetic energy it was having at that moment, it is going to retain that. This kind of now further fall in the height, loss in the potential energy is only going to benefit translational kinetic energy.
This is what we have to be careful here in this question. And this was the catch also, let me tell you. Otherwise, ये question IIT लायक नहीं होता. बच्चों से गलती यही हुई होगी, I guess. कि उन्होंने सीधे सीधे टोटल रोटेशनल एंड काइनेटिक करके आंसर निकाला होगा, जो गलत आंसर आता है. So we have to be now careful that after it has actually left the contact, the further loss is going to be divided into only translational kinetic energy plus the rotational kinetic energy which it has gained at the time when it has left the contact. कहीं लिख लो ये point. It's a very important point for all of you. After the cylinder leaves the contact, after the cylinder leaves the contact, the rotational kinetic energy remains fixed throughout the further journey. Remains fixed throughout the further journey. However, translational kinetic energy keeps increasing. Translational kinetic energy keeps increasing. अब ट्राई करो. So what was RKE when it has left? Half I omega square. What is that? Half mr square by 2 into v square by r square. ठीक है? Therefore, m v square by 4. This is rotational kinetic energy at the time when contact is lost. At the time when the contact is lost, RK is mv square by 4. I can write mv square by 4 as 4gr by 7. So this is mgr by 7. Got it? So this is RKE. ठीक है. अब ये कांस्टेंट लेके चलना, ये फिक्स हो गया. अब ये नहीं वेरी करेगा. इसका मतलब तब भी ये वही रहेगा when the radius becomes flat. Okay, but when the radius becomes flat, this is the diagram. When the radius becomes flat, how much is the fall in height? R is the fall in height. Okay. So now you can address once again the law of conservation of energy. Once again address it and tell me in totality करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि if I address the situation from the point when the contact has loosed, आप बैल मुझे मार वाली बात होती है, उलझ जाएंगे अंदर जाके फिर से, क्योंकि थीटा तक तो गया ही था. थीटा किस टर्म में है? cos इनवर्स 4/7. पता लगा 90 माइनस थीटा भी उसी टर्म में आएगा, इनवर्स के टर्म में फंसने वाली बात होगी. तो काम करते हैं, हम पूरे सिचुएशन को फिर से एड्रेस करते हैं. मान लेता हूं कि पूरी लॉस जो हुई है पोटेंशियल एनर्जी की, वही लॉस तो कन्वर्ट हुई होगी किसमें? काइनेटिक और रोटेशनल काइनेटिक में. तो पूरी लॉस कितनी हुई पूरी जर्नी में? mgr. यस या नो? वेरी गुड. कहां गई होगी ये तो है ही है, प्लस वो चीज जो मुझे नहीं पता. ठीक है, तो मैंने लिख दिया TKE प्लस
प्लस mgr/7। ठीक है, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, 6 mgr/7 इज इक्वल टू TKE। बहुत बढ़िया, ये हो गया 6। आंसर देखो, TKE अपॉन RKE। I think 6 is the answer. Yes, children, 6 is the answer. ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो है तो सिमिलर, बट स्फेयर के ऊपर स्फेयर रोल करा रहा हूं मैं। ठीक है, एक बड़ा स्फेयर, उसके ऊपर एक छोटा स्फेयर रोल करा रहा हूं। कंसेप्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसलिए मैं चाहता हूं आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ रेडियस r rolls down another sphere of radius capital R. Find the angular speed of the sphere when it breaks off the contact from the sphere. The initial speed of the sphere is negligible. क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, देयर इज अ बिग ग्लोब और उसके ऊपर एक छोटा सा एक स्फेयर है जिसको मैंने हल्का सा इंपल्स दे दिया, पुश कर दिया, सो दैट इट स्टार्टेड रोलिंग। Okay, it's not sliding, rolling. Friction is sufficient enough to let it roll. You have to find the angle at which the contact is broken off. Yeah, angular velocity, not angle here. Angular velocity at which the contact is broken off from the bigger sphere. I will help you only when you fail to attempt it. Otherwise, I'm very sure that अगर आपने ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा जो मैंने किया इसके पहले वाला, you all will be able to do it. फटाफट एफबीडी बनाओ, फटाफट इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो। You hardly know where the contact will be broken, so you have to take angle theta first, and then at the time when it is broken, normal reaction will be 0. तो पहले आप जनरल इक्वेशन बना लो, and then in general equation you can take n equal to 0. Go ahead. रेडियस सोचो, रेडियस दोबारा सोचो। एक बड़ा बनाओ, एक छोटा बनाओ, नीचे वाला स्फीयर काफी बड़ा बनाओ। ठीक है, ये वो सिचुएशन नहीं है जिसमें वो एज था। हाँ, उसके बाद तुम्हें दूसरे छोटे वाले स्फीयर को फिर रोल करके जब आप आगे बढ़ोगी तो उसके रेडियस में और बड़े वाले स्फीयर के रेडियस में भी कुछ रिलेशन होगा। The circular motion which will take place here will not be of radius capital R. Who will tell me what will the radius of this circular motion?
इसी दिन के लिए आप लोगों को हम शुरुआत में सिखाया गया था कि जब भी आप कोई डायग्राम बनाओ तो डायग्राम में हर चीजों को प्लीज ट्राई टू एड्रेस properly. This is the radius r given and this one is capital R. So don't you feel that ये motion यहाँ हो रहा है? So what is the radius? हाँ, वो गलती कर रहे हो आप, ठीक है? So the radius is r plus r. अब ट्राई करो, एक पॉइंट ये था, बाकी अब मैं नहीं बताता, आप खुद ट्राई करो. फिर तो आपने उसमें भी गलती की होगी, जो मैं क्वेश्चन दे रखा है मैंने, एक छोटा सा स्फेयर है आर रेडियस का, वो किसी आर रेडियस के लूप में इट इज लूपिंग अप, टॉप पे जाके कुछ बताना है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन एट द बॉटम सो दैट इट मेक्स द कंप्लीट. उसमें भी आर का चक्कर है, देख लेना. ये नहीं, लास्ट में था एक लूप वाला. हाँ हाँ वो वाला. ओके, इक्वेशंस बना लिया. कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? क्या बात. नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, बताओ. And therefore what is v square? एनर्जी वाला इक्वेशन बनाओ. Make the equation for the energy. Half I omega square plus half mv square is equal to mg r plus r 1 minus cos theta. I क्या लोगे? What is I? Moment of inertia of a sphere. 2/5 mr square. Omega square v square upon r plus r का whole square plus half mv square is equal to mg r plus r 1 minus cos theta. कैंसिल करो. सबसे पहले तो m को ही कैंसिल कर देता हूं. क्या गया? 4/5 v स्क्वायर अपॉन r प्लस r का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर भी है शायद ऊपर, आर स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू g r प्लस r 1 माइनस कॉस थीटा. या बच्चों सब आपका भी आ गया? अब जरा आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके आप v निकाल लो. क्या हुआ? 4/5 इसलिए क्योंकि, अच्छा 4/5 सॉरी 1/5 सॉरी 1/5. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यूज करके v निकाल लो. v को बाद में r प्लस r इंटू ओमेगा करके ओमेगा निकाल लेना. ठीक है? आई डोंट हैव टाइम सो आई एम राइटिंग द आंसर हियर. यू मूव ऑन. 10g r plus r upon 17 r square. Omega is 10g r plus r upon 17 r square. ये आंसर है, कर लेना. ठीक है?
Last question. I have discussed this last time. I thought I must do this time with you. There's a boy of mass m who is standing at the edge of a platform which can rotate. Okay? And his friend is throwing a ball. His friend is actually not on the platform. He is not the part of the platform. He is throwing the ball from some distance away. And the boy who is standing on the platform, he catches the ball. Okay? Platform starts rotating. You have to find the angular velocity of the platform. And then I thought that there should be some twist in the simplicity of the question. Then I asked the boy to rotate now. Ask the boy to walk. He is full of joy because just now he has caught the ball. So he started walking. And he started walking, two different options given. One in the direction where the platform started rotating, and the next in the direction opposite to the platform rotation direction. And then you have to find that what is the new angular velocity, because by virtue of walking, he is going to generate some angular motion to the platform. Even if suppose he might have not caught the ball, and you could have asked the boy in the beginning that start walking, the platform could have started rotating. कौन बताएगा? If I am a boy and I started walking on a platform, suppose in clockwise direction with respect to me, myself, and the platform, in which direction the platform is going to rotate? Anti-clockwise, because naturally I will be pushing the platform in the backward direction. So that means my effort of making myself rotate in clockwise is going to generate a rotation anti-clockwise through the platform. Keeping this in mind, you can address the next part when the boy started walking. ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट ट्राई करो. Data already given. All of you make yourself busy in applying the one of the conservation law. Obviously ओमेगा निकालना है तो कौन सा कंजर्वेशन लॉ लगाओगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ऊपर करने साथ बस ऊपर करने देखिए कुछ दिखता है, मैक्सिमम है. अच्छा बता दो, मैं बता देता हूँ. If the velocity of the ball of the plate, if the velocity of the ball was v along the rim of the platform, what would be your answer if the first boy starts walking immediately after catching the ball with respect to the platform? Number one in clockwise direction, number two in anti-clockwise direction. ये दो ऑप्शन है पीछे जो दिखाई नहीं दे रहा, आपको लिख लो. The first in clockwise direction and next in anti-clockwise direction. मतलब boy started walking, यहाँ तक दिख ही रहा है ना? Would be your answers if the first boy starts walking immediately after catching the ball. Number one in clockwise direction, number two in anti-clockwise direction with respect to the platform with the same velocity v through which the ball was thrown. Velocity भी वही है v. एक बढ़िया सा डायग्राम बना लो पहले.
Moment of inertia of the platform is given I. Tell me, children. What was the angular momentum if I apply the law of conservation of? What was the angular momentum before the ball was caught? By law of conservation of angular momentum, low comb. What was the angular momentum before the ball was caught? What was the linear momentum of this ball? So should I write MVR? Because I know that after the ball is going to be caught, the platform is going to rotate about the center only. So what is the distance from the center? R. So MV into R is the angular momentum. Now this angular momentum is going to be converted into total angular momentum of the buoy plus platform after the ball is getting caught. And what is that? Total angular momentum of buoy plus platform will be total MOE of buoy plus platform. Platform ka MOE, buoy ka MOE is equal to into omega. Got it? ठीक है, एक और गड़बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि after the boy is catching the ball is the part of the system. So he catches the ball, so he is holding the ball naturally. So अब ठीक है, ठीक है, ये हो जाती है गलती आपसे भी. So now then what is omega? First part. With this angular velocity, the boy is going to rotate after he catches the ball. आपको assume करना होगा यहाँ पर कि the platform after this event is rotating in its direction. You tell me, I will move on after this. Whether you want to rotate the platform in clockwise or anti-clockwise, please assume. Because it could be both way. It depends the way the ball is being thrown and the ball is being caught by the boy. Okay? So if we assume that the ball is being caught in such a way that after catching the ball, the platform is going to rotate, say, clockwise. If we assume, then how to address then the two situations? Let the platform moves clockwise after the ball was caught. ठीक है, like this. एंटी ले लो. डायग्राम जो मैंने दिखाया है उसके हिसाब से लग रहा है कि एंटी होगा ये, इसलिए एंटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. Now let the boy start walking. In any case दोनों ऑप्शन लेना है हमें. Now first case, let the boy starts walking in the same direction as the rotation of the platform. Okay, so if the boy starts walking anti-clockwise with velocity v. Come on children, address this situation. The boy started now walking with velocity v. So how much angular momentum he is going to impart to the table? Boy is walking along with the ball in his hand. So he has not thrown the ball. He is still holding the ball in his hand and then walking. And therefore, the angular momentum which the boy plus mass of the ball is going to be generated is going to be transformed to the table platform, and the platform is going to rotate in anti-clockwise, clockwise, because of the walking of the ball. Because earlier the platform was rotating in anti-clockwise. So you only told me that if the boy is walking in anti-clockwise, the result of the rotation of the boy will have an opposite rotation to the platform. Okay, so how much
angular velocity. Initial angular velocity is omega when he caught the ball, minus omega dash will be the net angular velocity. Where omega dash is the velocity which the boy generates because he actually started walking. Okay? Now tell me how much this omega dash is going to be in terms of omega. सोचो. What is the velocity of the boy with respect to platform? What is the mass of the boy? Plus m. Plus m. What is this? Angular momentum, which he generates because of internal energy which he has. खाते पीते घर का है, ठीक है? Now he started walking. Consequently, this angular momentum is now going to be transformed to the platform. I can platform afford to move without taking the boy and the ball? Because the boy and the ball is still find himself on the platform. So whenever the platform does any act of rotating in whatever sense, it is not only going to rotate itself, it is also going to rotate the boy and the ball. And consequently, the MOE which I have to take here is the MOE of the system. And MOE of the system is I plus please find omega dash from here, substitute omega dash here, get the answer. In second case क्या करोगे? This minus sign will convert to plus sign. ठीक है? Because now the boy is going to walk to support the platform. ठीक है? समझ आ गया? One more question. I will be doing rolling separately next class. Rolling with slipping and without slipping. But since time is there, so let's do one question at the end on rolling with slipping. Okay, one question only, where I will be telling you that how the law of conservation of angular momentum will help us quickly to find the velocity after the pure rolling begins. वैसे मैंने पिछली क्लास में आपको याद होगा बताया था कि pure rolling begins after certain time whenever the slipping starts. याद है सबको? And who does the job? Friction does the job beautifully. It supports one motion and opposes the other motion till V equal to R omega. ठीक है? But that is one approach. That is a little lengthier approach where time has to be calculated and then go back to the equations of motion and time. There is another beautiful approach to this kind of problem. Okay, where the angular law of conservation of angular momentum only will help you out to find the pure rolling begins, when the pure rolling begins and the velocity. There's no need to find the time and all that equation. See that approach today. Okay, ये note कर लो, heading डाल दो कि pure rolling कैसे बेटा? हाँ आने दो. पॉजिटिव नेगेटिव इज नॉट आवर कंसर्न बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो ऐसे चल रहा था, सपोज करो मैं नेट निकाल रहा हूं, तो अगर ओमेगा डैश बिकम्स मोर देन ओमेगा इट हैज टू बी नेगेटिव. इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि कैच करने के बाद जिस वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव माना था, बजाय उसके चलने के चेंज द बॉय स्टार्टेड वॉकिंग, रिवर्स चलने लगा प्लेटफॉर्म. सी दिस इज अ स्फीयर, प्योर रोलिंग हेड डाल दो, and it is actually rotating in this direction.
and it reaches, last time आपने क्वेश्चन भी किया था, उस टाइम नहीं था तो आपने पता नहीं आंसर कौन सा किया था, सही था या गलत था याद नहीं है, and this reaches to a particular surface performing pure rolling where VCM is equal to R omega. Friction is there at the contact and suddenly it strikes this surface and it started going back. Now you have to think of what will happen. When it strikes this surface, it will be reverting back. Try to understand that strike karte samay, is there any force which will generate the torque at the point when it strikes? And if there is no force which generates the torque, then one thing for sure, that direction of the motion will change, the body will start coming back, but the angular motion will remain same. Omega will remain same. Only direct, not only direction or the magnitude as well. देखते हैं टॉर्क. What is the force at the contact? कहां से force लग रहा है? Normal reaction. Where is the acting normal action in this direction? Weight. ठीक है? None of them are going to generate any torque. यही दो additional, weight तो पहले भी था. Normal reaction is the additional force which is eventually passing from the center, and therefore it will not generate any torque. That means जैसे ये टकराएगा, its direction of motion will be reversed. However, the angular motion will remain in the same direction. This is very interesting. A sphere now started moving in this direction with VCM, whereas the angular motion is in opposite direction. ठीक है? Whenever there is a rotation going on, rolling going on, पिछली क्लास में बताया था, if from my behalf, अपनी तरफ से देखोगे आप तो, अगर इस तरफ से कोई व्हील रोल कर रही है, if it is rolling anti-clockwise, then translation is supported. But if it is rotating clockwise, then this translation is not supported. Then which translation is supported? Other way, opposite direction. That means the anti-clockwise rotation supports the from your side. From your side, anti-clockwise rotation supports the forward translation. Fine? Is it okay? We are not supporting, then what will happen? We are not supporting rotation, pure rolling here. Then क्या होगा यहाँ पर बताओ? What will happen? Slip होगा. Now there will be slipping. And the slipping will be in this direction. Forward or backward? सोच के बताओ. ये होगा या ये होगा? ये होगा या ये होगा? इसको क्या कहते हो आप? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? और इसको? ठीक है, तो क्या होगा? क्यों फॉरवर्ड क्यों होगा? इसमें आपको प्रॉब्लम कहां, प्योर रोलिंग में प्रॉब्लम कहां आ रही है? आप किसको किल करना चाहोगे? कौन सा मोशन आपके अगेंस्ट गया है, प्योर रोलिंग के अगेंस्ट गया है? रोटेशन या ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन तो हो ही रहा है, ट्रांसलेशन तो चलता रहेगा. हैड इट बीन रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस कुड हैव बीन इन फेवर. आपको रोटेशन खत्म करना है. कौन खत्म करेगा रोटेशन को? फ्रिक्शन. तो अब आराम से पता लगा लो, फ्रिक्शन किधर होना चाहिए इस रोटेशन को खत्म करने के लिए? ऐसे या ऐसे? बैकवर्ड. ठीक है, दैट मीन्स स्लिपिंग इज फॉरवर्ड. ठीक है, कहीं से कंफ्यूजन कोई है तो और भी तरीके हैं हमारे पास समझाने का, और भी तरीके निकालने का. दोबारा बताओ. देखो, when there is a pure rolling, I cannot use these kind of sentences. Translation is hurried, rotation is hurried. I will always say that both are supporting beautifully each other. V equal to R omega. बल्ले बल्ले. ठीक है? But when there is a slipping, then one of the motion is going to be hurried. Which is going to be hurried, that you have to decide. Now try to understand, if translation is hurried, then there is always a chance of skidding. This is all right. The way the vehicles are being, hard brakes are applied by the kids. मोटरसाइकिल चलाते समय बच्चे क्या करते हैं? सडन ब्रेक लगाते हैं.
तो सडन ब्रेक लगा के कौन से मोशन को खत्म किया, इसलिए कौन सा बचा, स्किड कर गया व्हीकल, ठीक है, रुक गए, धूम 2 धूम 3 जो भी पिक्चर आई सारी। अब सपोज कीचड़ में फंस गया व्हीकल, मड में, सो कौन सा मोशन हरीड हो गया, कौन सा खत्म हुआ, ट्रांसलेशन, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है, उस केस में फॉरवर्ड स्लिपिंग। सो अगर हम स्लिपिंग डिसाइड कर लें तो फ्रिक्शन निकालना आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो फ्रिक्शन विल बी, और अगर बैकवर्ड स्लिपिंग है तो फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, पहले ये रोल करता हुआ जा रहा था आराम से, द बोथ वे सपोर्टिंग ब्यूटीफुली, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, v इक्वल टू आर ओमेगा। सडनली एक दीवार आ गई, ठीक है, दीवार से डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हुआ, रोटेशन पे कोई फर्क पड़ा नहीं। हैड इट बीन रोटेशन आल्सो रिवर्टेड, इट कुड हैव बीन अगेन प्योर रोलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट ट्रांसलेशन तो चल दिया, रोटेशन साथ नहीं दे रहा है, तो ट्रांसलेशन इसका मतलब ज्यादा है, क्योंकि रोटेशन है ही नहीं, साथ नहीं दे रहा मतलब रोटेशन है ही नहीं, जो मुझे चाहिए वो है ही नहीं है। And if something which I wanted in terms of rotation, if it is not there, that means translation is going to dominate. So what will happen? Skidding. And therefore friction will be in backward direction. Okay? Now till this friction will continue to act in backward direction till omega becomes 0. और फिर जाके omega 0 के बाद क्या होगा? After omega becomes 0, then the same friction will create rotation which starts favoring, but in the beginning it might not be sufficient in magnitude to favor the linear motion, because अभी तो start हुआ है, अभी आपने रोटेशन 0 कर दिया, अभी भी स्लाइडिंग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी ओमेगा इतनी जल्दी, भी तो पैदा हुआ ओमेगा, इतने जल्दी ओमेगा कैसे मैग्नीट्यूड वाइज गेन कर लेगा, इसका मतलब फर्दर सम टाइम रिक्वायर्ड, जहां तक फिर से स्लाइडिंग होती रहेगी, एंड देन एट दैट टाइम इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, देन यू बैंग अपॉन सेइंग दैट v इक्वल टू r ओमेगा, न्यू v इक्वल टू r इनटू न्यू ओमेगा रादर दिस, ठीक है। इसका तो ये एक टिपिकल सिचुएशन हो सकती है। लास्ट टाइम जो आपने किया था IIT-JEE का क्वेश्चन था वो यही था, जिसमें देयर वाज अ डिस्क और समथिंग स्ट्राइक्स द सरफेस एंड देन स्टार्टेड परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, ठीक है। लिखना है कुछ या समझ आ गया? तो फिर क्वेश्चन ट्राई करो। अब नाउ लेट मी टेल यू, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का दूसरा मेथड, एक मेथड तो वो था, मैं रिपीट करता हूं 5 मिनट रहो, कि मैं इस पूरे क्वेश्चन को सिर्फ फ्रिक्शन के एंगल से एड्रेस करूंगा, मेरे दिमाग में एंगुलर मोमेंटम वगैरह कुछ है ही नहीं, एज इफ हम लोग लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इट विल ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय द एक्सेस मोशन in one mode and generate the required motion in other mode. So what is the excess motion? Translation. So friction will keep reducing the translation, and in this situation it was excess rotation also. Why? Because rotation was in opposite direction. So here first friction will do killing job for both the motion. It will not only reduce v, it will also reduce omega. However, there will be time, say t1, when omega becomes 0 and v becomes say something we can calculate. आ गया, ठीक है। After that again another journey begins when the same friction supports the angular motion. So from 0 omega will be gained and then linear velocity continue to reduce till v equal to r omega. ये थोड़ा सुन के भी लग रहा होगा ये थोड़ा लंबा सा पाथ है, सॉल्व तो हो जाता है लेकिन आपका बहुत टाइम बर्न हो जाता है इसमें। ज्यादातर केसेस में सिंपल तरीके से भी करोगे इस तरह से, इस मेथड से तो आपके 4 या 5 मिनट लग जाते हैं। आपको मैं 1 और 2 मिनट में सॉल्व करने वाला मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है। नाउ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज mvr, ठीक है, एंड i ओमेगा, दो ही तो फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। तो व्हेन देयर इज अ प्योर रोलिंग गोइंग ऑन, what is the angular momentum? Answer me. When there is a pure rolling going on, what is the angular momentum? I omega or mvr or both? Okay, forget about it. Suppose there is a mud and the wheel is doing this kind of motion. What is the angular momentum? जोर से बोलो।
I omega, दबी दबी आवाज में, ठीक है? Why? Because we all now witnessing that there is no translation, so there is no confusion, ठीक है? When there is a skidding going on, ब्रेक लगाया बच्चे ने और बाइक स्किड कर गई, still angular momentum is there. MVR, angular momentum may be about the ground, because there is a translation going on. And if I told you on that day, if I keep looking a point and start moving in a linear motion, I will always find that I myself is not actually moving linearly. I am translating myself with some angular shift as well. So angular motion is there. So MVR. So that means when the pure rolling is going on, and what is the angular momentum? MVR plus I omega. Okay? MVR because of translation and I omega because of rotation. Okay? Now, friction is not doing any work during pure rolling. During pure rolling, I make myself very clear. During pure rolling, only friction does not do any work. But once there is a slipping, the friction start doing work. That means friction will generate a torque. Okay, there will be angular. There will be obviously it will be difficult for you to apply the law of conservation of angular momentum because there is external torque acting. How to apply the, law of conservation of angular momentum? Remember that this law is applicable only when there is no external torque acting. That means that range of the journey is now excluded from our discussion if we apply the law of conservation of angular. Which range? जब वो slip करने लगा, one is hurried, other is, सब भूल गया. क्यों? क्योंकि सॉरी वहां मैं अप्लाई नहीं कर सकता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्या करूं? इसका तो मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्सट्रीम सिचुएशन में अप्लाई कर सकता हूं. कौन कौन से एक्सट्रीम? व्हेन द प्योर रोलिंग बिगिंस वंस अगेन, तब तो कर ही सकता हूं. ठीक है? अब कंजर्वेशन क्या सिखाता है? मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व. दैट मींस जब स्टार्ट में देयर वाज एंगुलर मोमेंटम given mvr plus I omega, that angular momentum can be equated to the new set of angular momentum when the pure rolling begins again with new linear velocity and new angular velocity. How are they related? V equal to r omega. ठीक है? तो मैं एक नट सेल में एक इक्वेशन लिख के खत्म कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे यही करना है. सपोज करो मैं कहता हूं mvr plus I omega is the angular momentum in the beginning, say am1, और थोड़ी देर बाद बहुत कुछ गड़बड़ी हो गई, किसी ने ब्रेक लगाया, कोई मड आ गया, कोई कीचड़ आ गया, टकरा गया दीवार से, ये हुआ वो हुआ, मर गया, मर गई, सब कुछ हो गया. फाइनली मेरे को लास्ट रिजल्ट ये बताया किसी ने, मिश्रा जी द प्योर रोलिंग वंस अगेन बिगिंस विद न्यू वेलोसिटी v डैश एंड ओमेगा डैश. मैं क्या लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू am2 is equal to mv dash r plus I omega dash. ठीक है? We can solve the question. Since this time is it not in your assessment also, we are going to do this in next class. It has been told to me that rolling is to be done in next class. So we will be purely doing the pure rolling in next class along with certain examples and questions. Thank you, children. Thank you very much.
that. So maintain a speed. I prepared you already yesterday that today we'll be discussing questions from thermodynamics. So what we had done till yesterday, we had started with thermodynamics already. And while doing thermodynamics, what we had primarily seen was that it talks about the enthalpy changes, where we see that our enthalpy is nothing but it is your, it is a state function. So it was simply HP minus HR. It was basically a summation of the enthalpies of all the products minus the enthalpy of all the reactants. All right, we basically take the delta H's of each of these heater formations and then we do products minus reactants. All this was something that we had already understood. Apart from it, the thermochemistry was basically revolving around the calculation of the enthalpy change only. And in enthalpy change, we see one more thing, that what is our H by definition? H kya hota hai? It is dependent upon your internal energy also. It is delta U plus delta of, what is it? H is equal to U plus PV. You all had food? So be loud. I mean, even if no one can hear you, you should always be spontaneous in answering. What is it? Delta H is equal to delta U plus delta PV. What is your delta H also equal to? It can also be written as delta U plus delta NG RT. Why am I writing NG here? Because this refers to the change in the number of moles of gaseous substances only. Now here, I can also write this. What is this also equal to? This is also equal to QP. Delta H is also equal to QP. Now we've already spent 2 classes on it, so I'm not revising anything today. QP is equal to QV plus delta NGRT. So you know under what all conditions your delta H can be equal to delta U. You need to understand that delta H will be equal to delta U or QP is equal to QV. One is like when you have constant pressure volume conditions, which is like quite difficult to attain, so we do not talk about it. Say, or when you have delta N to be equal to 0, that is the easiest way to get it. So when will delta N be equal to 0? In that case you can have many cases. Like one is, you will always calculate delta N as the difference in the number of gaseous molecules in the products minus reactants. So that means if I have solid, liquid, if a reaction is only in terms of solids and liquids, then in that case, this will hold good. If I have no gaseous reactants or no gaseous products, why do I say solid, liquid में क्यों number of moles तो उसमें भी change होते हैं? Because not just for pressure, even the volume change is negligible when you talk in terms of solid liquid reactions. All right, so you primarily talk in terms of gaseous molecules only. The other thing is when your delta V is equal to 0, because your reactions are generally carried out at constant pressure. So if your delta V is equal to 0, then again your delta H will be equal to delta U. And the third case can be when the number of moles, if you have a reaction in terms of gaseous substances only, and your number of moles on the LHS and RHS are same. Like for example, if I say A, something is in gaseous state, plus B, that is also in gaseous state, is giving me 2 moles of AB, which is also in gaseous state. So the number of gaseous substances is like 2 minus 2. And all of them are in gaseous state. So then in that case, again, your delta H will be equal to delta U. So when will your QP be equal to QV? 1 at constant volume, right? When you know that the reaction is carried out at normal pressure conditions. Then second, and very importantly, if your reaction comprises of no gaseous products at all, if it has only solids and liquids. And the third one, when your reaction is in terms of gaseous substances, but you see that the number of moles on the right hand side equate the number of moles on the left hand side. So then in that case, again, we see that your delta H is equal to delta U. Another thing, very importantly, and then we can move on with the questions, is the concept of bond energies. Bond energies, bond enthalpy, दोनों एक ही बात है. अभी तक, what did I tell you? That whenever you have to
calculate your delta H, and if you are given enthalpy changes, then in that case always it will be the total enthalpy of the products minus reactants, because it is a state function. But if your bond energies are given or bond enthalpy, एंथैल्पी से कंफ्यूज मत होना, अगर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, इट विल बी रिएक्टेंट माइनस दैट ऑफ products. But before that, just understand what is your bond energy. They are nothing but the energy released when 1 mole of bonds are formed. Say when 1 mole of bonds are formed from isolated atoms. In gaseous state. They can either be defined as the energy released when 1 mole of bonds are formed from isolated atoms in gaseous state, or they can also be related to energy required to dissociate 1 mole of bonds. Energy released, as well as you can also write them as energy required to dissociate 1 mole of bonds. So that is nothing but bond energy. थोड़ा सा concept तो meaning से ही आ जाता है कि bond की energy is bond energy. The only thing is that now if you have to calculate the delta H for any reaction, it will be the total bond energies of all the reactants minus the bond energies, the summation of the bond energies of all the products. This is something that you have to remember thoroughly. बाकी सब में एंथैल्पी दे रखा होगा, इट विल बी HP माइनस HR. बॉन्ड एनर्जीज दे रखी होंगी तो इट विल इमीडिएटली बी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. और इसके एप्लीकेशंस होते हैं कि यू कैन फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग दिस, you can find out the enthalpy of formation using this, you can easily also find out the resonance energy. These are some of the applications of bond energies that if you have the bond energy data with you, then you can easily find out the enthalpy of the reaction, enthalpy of formation, and you can also find out the resonance energy. Clear? Now can we move on to the questions? We have done only the first law till now. Thermochemistry is just an extension of the first law. And what have we discussed till now is nothing but your P, V, T, H, E, where E can also be written as U. And what else have we discussed? Q, QP and QV, and then we have C. These are the terms by and large that we've discussed. So I've summarized the two classes also, right? And one more thing, W. Anything else that I'm missing? So we have talked about pressure, volume, temperature, enthalpy, internal energy, heat, work done, heat capacity. By and large, these are the only things that we've done. So now let's talk about the questions. A system gains 150 calories of heat and does 100 calories of work. What is the change in internal energy of the system? Very simple question, simple application of first law. What will it be? 50 calories. You have the answer as D here. I hope no one has any doubts regarding this. This is simple first law. Next question. A system expands from 1 meter cube to 4 meter cube against a pressure of 10 to the power minus 5 pascals. So pressure is given to you, volume change is given to you. What is the work done by the system? Please make a note of what is the question carefully. What is the work done by the system? There is a question also, again a doubt, what is resonance energy? Now, when we talk about resonance energy, I have already explained the resonance phenomena in one of the previous topics, if you remember. It is nothing but delocalization of the electrons. So, जब भी हम resonance energy की बात करते हैं, चाहे अब इसके अंदर कितने bonds हैं? 3 double bonds हैं, 3 single bonds हैं. This benzene is the easiest structure that in which you can exhibit resonance.
or which exhibits resonance rather. So इसके अंदर जो इन सब छयों की बॉन्ड एनर्जी का एक सिंपल वो होगा, I mean resonance energy would be the overall energy which is making this structure stable over the normal structure. That is known as the resonance energy. It has a canonical structure, right? Resonance energy is the energy difference between the resonance stabilized structure and the normal structure over the bond energies which it would have been had the structure been non-resonating. अगर ये structure resonate नहीं करता तो इसकी क्या energy होती, और अगर ये resonate कर रहा है तो इसकी क्या energy होगी, दोनों का जो energy difference होगा that will give me the resonance energy, and this is the energy which is responsible for the stabilization factor, क्योंकि resonance वाले structures हमेशा ज्यादा stable होते हैं. Okay? Then next question when we talk about the next question, it's simply work done, and work done we have the formula minus P delta V. So you have very simple question. I don't think it has to be requiring any kind of special knowledge. So the answer in this case will be, what is the delta V? 3. What is your pressure? 10 to the power minus 5. So minus 3 into 10 to the power minus 5 joules. Okay. In which of the following reactions delta E would be greater than delta H? Delta E would be greater than delta H. In this case, what you have to make sure is delta E is what? You know what is delta H? E क्या है यहाँ पे? Internal energy. So मैंने बोला था कई बुक्स में E लिखा होता है, कई बुक्स में U लिखा होता है. तो delta E, and what is your delta H? That is delta E plus delta of PV. So that means delta E is equal to delta H minus of delta PV. Now, or you can write it as minus P delta V also if your pressure is constant. So this becomes equal to minus P delta V, right? If now my volume, this factor is negative. What is this factor? V final minus V initial, right? If this factor is negative, फिर ये add होगा, फिर मेरा delta E would be greater than delta H. Clear cut knowledge है, ये तो simple है. So when will delta V be, I mean negative? When my volume of the final or the products would be greater. देखो अब कौन से केस में ऐसा हो रहा है. First case में the volume of this thing products is greater, so that will be positive. I want the volumes of the products to be lesser. Second case में, this is question number 3. In the second case, what we basically have is VF should be lesser than VI. In the second case, again, we have 2 minus. So we have 2 on the right hand side, 4 on the left hand side. So VF is lesser. So here in this case, B part, what we see is that this 2 minus 4 would be negative. I mean number of moles को compare कर रही हूँ. So if that is negative, then in that case, this becomes positive and delta E becomes greater. So the answer is B. Clear to everyone? You don't even need to look at the other options. वैसे अगर time हो तो देख भी लेना चाहिए. Next question. Please put your pens to paper. 2NH3 gives N2 plus 3H2. Delta H is given for this reaction. In the reaction above, 100 grams of ammonia is allowed to react to produce nitrogen and hydrogen gas. How much amount of heat would be absorbed? The question should be, if in the above reaction, please make the correction, if in the reaction above, 100 grams of ammonia is allowed to react to produce nitrogen and hydrogen gas, how much amount of heat would be absorbed? Calculate quickly. 2 moles are absorbing 92.2. What is 1 mole equal to? That is 14 plus 3, 17. 17 into 2, 34. So that means 34 grams is absorbing 92.2 grams. You want me to do it on the board? Work it out quickly. Let me see your speed. So for 1 mole, you can easily calculate 1 mole, which is equivalent to 17 grams. It is taking 46.1 kilojoules. All right. Then for 1 gram, ये तो unitary method है जो बचपन से करते आ रहे हो. For 1 gram would absorb
46.1 upon 17 kilojoules of energy. So therefore 100 grams would absorb 46.1 upon 17 into 100 और इसको roughly calculate कर लोगे, so you can easily get 271 point something. All right, coming back to question number 3. We are going to hit a century. I'm like believing that. Question number 3 still. Here, in which of the following reactions delta E would be greater than delta H? अब अगर मैं delta E would be greater than delta H की बात कर रही हूँ तो उस केस में I know delta H is equal to delta E plus P delta V, right? So delta E क्या है मेरा? delta H minus P delta V. अगर अब मेरा यहाँ पे डेल्टा V या डेल्टा N नेगेटिव हो जाए तो मेरा डेल्टा E विल बी इक्वल टू डेल्टा H प्लस P डेल्टा V हो जाएगा वो. तो मेरे को ऐसा रिएक्शन ढूंढना है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑन द राइट हैंड साइड आर लेस देन लेफ्ट हैंड साइड. अभी हमने बात करी है कि अगर सॉलिड लिक्विड वगैरह है तो हमें उस पर ध्यान ही नहीं देना है. तो इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस केस में it doesn't solve the purpose. Second reaction में number of moles यहाँ पे 2 हैं, left hand side में 4 हैं. So delta N in this case would be negative. So then that means delta E plus some factor is equal to delta H plus some factor is equal to delta E. Okay, so that is why here you have solid. In the C part you again have solid, liquid, solid, liquid. तो इस केस में तो वैसे ही डेल्टा V आप 0 मान के चलोगे. So this is that case in which your delta H is equal to delta U, right? And then the last case again is another case where your delta H is equal to delta U. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब gaseous products हैं and इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं. So it is delta H is equal to delta U here, delta H is equal to delta U here. Here delta H is less than delta E. Reason कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. इसके अंदर हमने देखा कि अगर 2 मोल्स जो अमोनिया के हैं, इफ दे आर अब्सॉर्बिंग 92.2 kilojoules of energy, what would happen if 100 grams of ammonia are reacting? 2 मोल्स का मतलब है 2 into 17 34 grams. तो इसका मतलब 34 grams are taking 92.2 और 17 grams is taking 92.2 divided by 2. Then in that case you would say 17 grams is taking 46.1, 1 gram is taking 46.1 upon 17, so 100 grams is taking 46.1 upon 17 into 100. Simple unitary method. Next question. What is the correct order from highest to lowest molar heat value for the 3 types of energy change? इस केस में क्योंकि आपने ऐसा कोई डेटा नहीं पढ़ा है तो आपको गेस वर्क नहीं करना है. ये सिर्फ तभी पता होगा जब आपने एक बार भी ऐसा क्वेश्चन करा होगा. Got the point? That is why I have put such questions also, where you may tempt to think. इसमें सोचने में ही 1 मिनट वेस्ट कर दोगे जो नहीं करना है. सोचने लग जाओगे ना कि केमिकल में क्या होता है, फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर में क्या होता है. सोचो, नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो. बट इसका करेक्ट आंसर इज डी. Here what we have to do is from highest to lower molar heat value. Remember that the highest molar heat value is for nuclear, followed by chemical, followed by any phase change. Phase change मतलब solid से liquid, liquid से gas, gas से solid, whatever, any phase change. So here what we have is nuclear followed by chemical followed by phase. पर अगर ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं आता तो you will just straight away move on to the next question. That is what we'll do now. Which metal requires the most energy to raise 1 gram of it, to raise the temperature of 1 gram of it by 1 degree Celsius? अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे? करना नहीं चाहिए, नहीं आता नहीं करो अटेम्प्ट. पर वैसे इसका मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट. Highest specific heat, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius. Aluminium की सबसे ज्यादा होती है. Out of copper, lead, nickel.
तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में गैस नहीं मारना. Here in this case aluminium. That is why I have put such questions also. What is the specific heat capacity of a substance if 2.41 into 10 to the power 4 joules are needed to change the temperature of 105.0 grams of it from 25 degrees Celsius to 250 degrees Celsius. इस case में what is the formula? The formula for the working formula will be ms delta T. ms मान लो, C मान लो, जो भी specific heat. This is what we have to find out. Delta T is given to you. What is that? 25 to 250. So that will be 225. ठीक है ना? This is the temperature change. The mass, this is what we have to find out. The mass is what? Mass is equal to 105. What is the specific heat that is given? 2.41 into 10 to the power 4. Look at the answer. All the options are way off from each other. The options are way off. So you can maybe round off also. So this is 2.41 into 10 to the power 4 upon 105 into 225 is equal to x. Round off करके ही cancel कर दो इसको. 105 को 100 से कर दो, 225 और उसको 25 से कर दो and get the answer quickly. It should be very simple. Because all the options, I have given you a clue before also in hand only. Look at the clues, all the clues are just way off from each other. ये minus 9.18 है, वो 1.08 है, ये 0.918 है, ये 1.02 है. So here in this case, for the seventh one, the correct answer is D, 1.02 joules per grams. The correct answer is this, 1.02. It's simply according to the formula that I have put on the board. Here what we have is 2.4 into 10 to the power 4 upon 105. So x will turn out to be somewhere 1.02 joules per gram per degree Celsius. Okay. Next question देखें. Which statement about enthalpy is true? So now you have to make your reading also quick here. Which statement about enthalpy is true? Heat is given off. ये simple understanding है. अगर आपकी understanding clear है तभी पढ़ना, नहीं तो फिर numericals ही solve करते रहना. Heat is given off to the surroundings in endothermic reaction. No, some substances have a negative specific heat capacity. आपको पता है, तो इसीलिए इसके बारे में अभी सोचो. Next statement. Specific heat capacity is same for all liquids. ये तो 100% नहीं हो सकती क्योंकि liquids all of them do not behave in an equal manner. Last, the sign of delta H is always negative in exothermic reaction. ये 100% correct है तो tick. So you don't have to say no to all unless you read all of them. Next, ninth question. Here what we have is what happens to the value of delta H for a thermochemical reaction if the reaction is reversed. जब भी साइन चेंज होता है तो अब वो देखो, जब भी हम ये दिस वी डिस्कस्ड यस्टरडे, व्हेनेवर वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसका साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा. सो दिस इज ए, डेल्टा एच हैज द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द साइन चेंजेस. बाकी सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. वैसे एक नजर मारनी चाहिए, क्या पता एक यही डिट्टो सेम सी में भी लिखा हो. सो इसीलिए मैंने बोला है, इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है. नहीं, you just go through once quickly and then you will get to know. The more you read, the more you will get the hang of how to go quickly with it. What is an exothermic process? अब इस केस में don't make a guess if you do not know. हमने कल देखा था वाटर की रिएक्शन आई टुक अप स्पेशली. जब वाटर आइस से लिक्विड बन रहा था तब भी एंडोथर्मिक था, जब वो लिक्विड से वेपर बन रहा था तब भी एंडोथर्मिक था. तो क्लियरली आइस मेल्टिंग गया, वाटर इवेपोरेटिंग गया. वाटर बॉइलिंग इज एज गुड एज समथिंग सिमिलर टू इवेपोरेटिंग. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वेपर, वाटर वेपर कंडेंसिंग. क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ वाटर इवेपोरेटिंग, दैट मींस लिक्विड टू वेपर में अगर वो एंडो है तो वेपर से वापस आते टाइम इट विल बी एक्सो. सो वाटर वेपर कंडेंसिंग क्लियरली. नेक्स्ट, which statement is true for the combustion of ethanol? Which statement is true for the combustion of ethanol? The enthalpy change would be the same. Here,
The enthalpy change would be the same in if gaseous water were produced. Second, the potential energy of products is less than the potential energy of the reactants. Third, the products of reactions occupy a larger volume than the reactants. And fourth, the reaction is endothermic. It's either B or C क्योंकि first और last तो बिल्कुल out लग रहे हैं. So now it's a 50-50 option. तो इसीलिए सोचना again, you do not have so much of time to think. The products of the reaction occupy a larger volume. How can you predict on the volume unless and until you have all the states in gaseous state? Is it occupying the products occupying larger volume? इसको हमने देखना नहीं है, इसको हमने देखना नहीं है. बचा क्या यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल्स. यहाँ पे कितने हैं? 3 मोल्स. तो प्रोडक्ट्स का ज्यादा कैसे हो गया? So what is the option? B. What is the energy required to evaporate 2 moles of liquid water given the following equations? This can be linked to the Hess's law also, or it can be just, what you have to think about is, question में लिखा है कि we have to tell the energy required to evaporate 2 moles of liquid water to gaseous water, right? So here in this case, I need the target equation is what? I need to convert H2O liquid to H2O gas. Now, if you check up the 2 equations which are given in the question, look at the 2 equations which are given in the question. यहाँ पे भी 2 moles of gas बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 moles of liquid बन रहे हैं. मुझे चाहिए liquid to gas. So what I can do is, I can do say equation number 1 minus equation number 2. अगर मैं equation number 1 minus equation number 2 कर देती हूँ, तो then in that case what we have is, these two get cancelled. 2H2 गया, O2 गया. I'll come to the previous question, but listen to this question first. 2H2 गया, O2 गया on the right hand side. So you will have 0. इसका अगर sum करेंगे, what am I doing? 1 minus 2. So this will be equal to 0, giving 2H2O gas minus 2H2O liquid. Or simultaneously, this minus this will also be done. And then you will take your liquid to the other side. So this will be your equation that we got here. Do you want me to solve it on the board? Anybody? So then in that case, what is the answer? अभी तक तो 88.0 kilojoules. Very clearly, this minus this. अब एक बात जो सुनने वाली है, when you do it for the CBSE subjective examination, then in that case you need to show. ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो अपनी इंटेलिजेंस खुद को ही टेस्ट करवाते हैं एंट्रेंस के टाइम पे भी. आप क्या करोगे? इसको भी करके देखोगे. इसको करने की जरूरत है जब आपको पता है कि 1 minus 2 से सामने सामने दिख रहा है कि वो कैंसिल एंड योर लिक्विड विल कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड माइनस करने पर. तो इसको सॉल्व नहीं करते रहना, सीधा दिस माइनस दिस करो, गेट द आंसर, पुट अ टिक. Got it? Do not solve the equations then and there. Just get it in your mind कि इस तरीके से अगर हम इसको rearrange करेंगे, then we'll get the correct answer. Now there was a question related to the previous question. How to predict the potential energy in the previous case? See, normally potential energy is by the virtue of the position of an object. Right? Now here in this case, you have not related potential energy to any of the terms of thermodynamics. We have not talked about the potential energy. So we were going through all the options to check out the best possibility from our knowledge point of view. Reaction is endothermic? Clearly nahi hai. Enthalpy change would be the same in gaseous if gaseous water were produced? नहीं, because जब carbon dioxide और water पे produce करने पर इतनी आ रही है, तो सिर्फ water पे definitely इतनी नहीं होगी. फिर हमारे options थे B and C. When I stated that now we are reduced with 50-50 option. Now in this case, again we go through both the statements again quickly, and we see that the products of the reaction occupy a larger volume than the reactants. We clearly say that नहीं, कि products का larger volume नहीं है, क्योंकि number of moles gas के यहाँ पे कम है. तो इसीलिए third option also goes off. So we are left with the only option 4, which is considered to be correct only by the virtue of the other 3 being wrong in this case, because you have not related potential energy to the products.
or the reactants. It says that the potential energy of the products is less than the potential energy of the reactants, which is by the virtue of the position and can be related to the number of moles also. This can be related to the number of moles. If the number of gaseous substances are less on the right hand side, then naturally the kinetic energy would be less, and you say that the potential energy would be more in order to adhere to the law of conservation of energy. थोड़ा सा concept difficult था, इसीलिए मैंने बाकी तीन को cancel करवा के I came to that. Next question. We have done the water one. Now question number 13. Here what we have is, which statement correctly describes the endothermic reaction? Again, basically करा तो कुछ भी नहीं है. U is equal to Q plus W, and what else you have done? H is equal to U plus PV. So you will have all the questions related to the same. Which is the correct one? सबने नहीं पढ़ी अभी तक? Describes the endothermic reaction. Now पहले वाली क्या थी? अभी जो हमने इससे पहले जो डाउट वाला क्वेश्चन था जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर कर रहे थे, और मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी को हम एक और तरीके से कंपेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स. अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स कम है, देन इन दैट केस यू कैन से दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज greater. So अगर endothermic reaction है, then in that case you can easily say that the products have higher potential energy than the reactants. उस केस में it was just the reverse. Then delta H is positive. उस केस में potential energy was lesser for the products, then the reaction was exothermic. इस केस में potential energy will be higher when endothermic. You can summarize this also. एक note लिख लो. When the potential energy of products is higher, then the reaction is exothermic. Sorry, then the reaction is endothermic. When the potential energy of the products is higher, then the reaction is endothermic. And if the potential energy of the products is lower, then the reaction would be exothermic. एक statement याद रखोगे, second automatically याद रहेगी. Now again, given a thermochemical equation, these are those questions which can just be solved by looking at the question itself. Look onto the board. Here, 2NO2 giving 2NO plus O2. Delta H इस reaction का given है. What is delta H for this reaction? अब इस reaction को अगर ध्यान से देखो, it is nothing but इस reaction को divide by 2 करेंगे. So इस रिएक्शन को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मुझे मिलेगा NO2 गिविंग NO प्लस हाफ O2. तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्लियरली इट विल बी 57 प्लस 57 किलो जूल्स. लेकिन इसको रिवर्स भी करना है तो माइनस 57. सो वेरी इंटेलिजेंट पीपल मे नॉट मार्क दिस. प्लीज बी वेरी केयरफुल. यू आर सपोज्ड टू एक्ट स्मार्ट ऑल्सो. सो इट शुड बी माइनस 57 किलो जूल्स. रिवर्स को जरूर ध्यान में रखना. Using the data below, what is the order of changes that occur when ethanol is heated from 25 to 85? This is a general question, which had you not done thermodynamics also you should have been able to solve. 25 से 85 degrees Celsius तक we are heating our ethanol. अब क्या क्या phase change का मतलब solid to liquid, liquid to vapor, vapor to liquid, liquid to solid, and so on. Here in this case, boiling point is 78.5. ठीक है, और melting point is minus 117. minus 117 है ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. तो जिसको सोचना वो सोचता रहे, and you lose on to the game. So here what you have to be careful, 25 से लेके 78.5 तक क्या होगा? टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर ही तो चेंज हो रहा है, कोई फेस चेंज थोड़ी हो रहा है. 78.5 पे क्या होगा? फेस चेंज. एक बार फेस चेंज हो गया, फिर उसके आगे 85 तक क्या होगा? टेम्परेचर चेंज. है कोई ऑप्शन ऐसा? डी ऑप्शन. क्योंकि इट इज नॉट फेस चेंज फॉलोड बाय टेम्परेचर चेंज. नो. फेस चेंज, टेम्परेचर चेंज, फेस चेंज. नो, क्योंकि सिर्फ एक ही बार फेस चेंज हो रहा है. टेम्परेचर चेंज, फेस चेंज. नो. टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फर्स्ट, then your phase change is happening, then temperature change. So you just have to be intelligent enough to think कि जो कुछ भी लिखा है हमें उसको सिर्फ यहाँ से सोच के करना है.
Then which statement best describes the formation of methanol from the elements, from its elements? Formation of methanol, मैंने value इसमें से हटा दी है. Delta H is just negative I've put. So what do you get the information? Endothermic heat is absorbed, exothermic heat is released, exothermic heat is absorbed, exothermic heat is released. अब जिसके concepts clear नहीं होंगे वो चारों को दोबारा पढ़ेगा, जिसको पता है वो immediately B को mark कर देगा, right? Yeah, BD. So then in that case, what will you do? Will not mark the answer. This is my mistake. Sorry. I did not change the fourth option. Which process results in the greatest endothermic change for 10 grams of water? Endothermic change for 10 grams of water. If you remember, when we had solved this question yesterday, for we had seen कि जितना change solid से liquid में endo है, उससे 10 times ज़्यादा it was endothermic when we were converting water from liquid to the vapor state. So here in this case, what it should be? Vaporization. Clearly आपको ये पता है कि melting के time पे it was endo, vaporization के time पे it was endo. तो solidification के time पे it will be exo and condensation के time पे also it will be exo. तो clearly ये दोनों options गए, इन दोनों का comparison था जिसमें vaporization is more endo. फिर 10 ग्राम हो या 100 ग्राम, it's just one and the same thing. The following decomposition reaction may occur in an airbag. ठीक है, reaction is given to you. What is the heat of formation of Na(N3)? Do it on your own quickly. I'm not giving you any clues now. मैं नहीं बताऊंगी कि इसके अंदर reaction is to be reversed and divided by 2. अभी तक तो कर ही लिया होगा. You should not be taking that much of time. Reverse करोगे तो plus, divide by 2 करोगे तो answer. What is the answer? So it will be plus 21.8 kilojoules. It should not be taking that much of time. Okay? You want me to repeat it? Anyone? Don't want to come to the previous question again. So here, all we had to do was heat of formation of 1 mole Na(Na3). यहाँ पे 2 moles given थे, तो 1 mole निकालने के लिए इसको divide by 2 करेंगे. Whichever step you want to follow, divide by 2 करेंगे तो 21.8 आ जाएगा approximately. And when we have to talk about the formation, मतलब NaNO3 should be on the right hand side. So in that case, we will be just changing the sign. A small sample released 2 into 10 to the power 10 kilojoules of energy while undergoing a change. What type of change is most likely occurring? Confirm. Again, नहीं पता तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे. Right? कोशिश करना तो चाहिए. केमिकल में नॉर्मली क्या होता है? A sample is releasing energy. A sample अपने आप से एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब it is not reacting with anything. तो is it chemical? No. It's not reacting. Chemical change is like when you talk about the composition of two substances changing or one substance decomposing on its own. So molecular change, generally nuclear reactions are the ones which emit out energy when they stand on its own. So from your 10th grade studies only, the best probability is C. बहुत competition feel हो तो C mark करना. Otherwise, there is no point taking the risk. Move on to the next question. And when we move on to the next, it is like based, looks like Hess's law, but I'm not sure. Given the two reactions, you are given formation of carbon dioxide. Next में formation of Fe2O3. ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं करने के. या तो Hess's law, just look up. Both the tariqas, I mean both the pathways are like absolutely acceptable. But the only thing is which is the quicker of the two. एक तो है कि इसके अंदर अपना what you do is, this is what we want the enthalpy of. So या तो इसको rearrange करोगे Hess's law के according and you will get this and you will make changes in delta H. Otherwise, look at the reaction. What is this? Fe2O3 का formation हमें given है, right? Any pure substance or the elemental substance in the pure stable state from its elemental form would have the enthalpy of formation as 0. इसकी 0. Fe solid 0. Formation of carbon dioxide is given to you. So then in that case, what you can do is this thrice of
equation number 1 minus twice of equation number 2 should give you the answer. बताओ solution के बाद आंसर भी मैं निकालूं बोर्ड पे? You want me to do it? Any pure substance from in its elemental form has the standard molar enthalpy to be equal to 0 at normal temperature and pressure conditions. And what is the temperature here in this case? The room temperature, 298.15. So ये भी elemental state में है, ये भी elemental state में है. So then in that case, the standard molar enthalpies for these two will be equal to 0. By and large. The answer now, do you want me to solve it on the board? I have already given you the clue. It is nothing but, iska agar I'm just writing it on the board for those of you who have not picked up because we'll have similar questions to practice. Fe2O3 plus 3C is giving 4 Fe plus 3 CO2, right? This is my reaction. So here my delta H can be written as, इस reaction का मुझे delta H बताना है. This will be nothing but delta HF of carbon dioxide multiplied by 3. So or 3 into delta HF of CO2 my plus 4 into delta HF of Fe solid minus ये HP हो गया. अब HR के लिए minus twice of delta HF of Fe2O3 minus thrice of delta HF of C. करते टाइम तो इतना नहीं करोगे, सिर्फ समझाने के लिए I am writing it on the board. This will be equal to 0. This is Fe solid. This will be equal to 0. All right. And this is something that you know, 3 into minus 393.5 minus 2 into minus 824.2. Now tell me the answer. I had calculated, let me check. D is 467.9. Clear to everyone? इसको करने का दूसरा तरीका सिर्फ यही है कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाइड बाय 3 and equation number 2 को multiplied by 2 and you subtract and then again you will get the same equation again, right? Next question. Let's see. Start working it out. A substance increases in temperature by 255 degrees Celsius. (255 degrees Celsius) means that your delta T is now 255. When a 983 gram sample of it absorbs 83200 joules of heat. So again, what is the formula? Q is equal to ms delta T or mc delta T, whatever you want to write. Delta T is given to you as 255. M is given to you as 983. Q is given to you as 83,200 joules. Specific heat आपने निकालनी है. You can see that the options are way off, so you can go about rounding off and finding out. So it will be, क्या है ये? Or you will be finding out 83200 divided by 255 into 983. So you can easily round it off and find out isko 250 मान लो, and you can just try and solve it. It will be somewhere around and you get an idea also whether it will be decimals. It will definitely be in decimals because you have almost the same range of the numerator and the denominator. So it will be either option A and either option or option B. So here in this case the correct answer is A. That is 0.322 joules per gram per degree Celsius. Okay. Simple. Q is equal to mc delta T. Don't take your hands off from your notebooks. You have more questions to do. Next question.
What is the, अच्छा next is already here. What is the delta H value for an exothermic energy change? Always negative. Next question. How much heat is required to vaporize 15.8 grams of methanol at its boiling point? Delta H vaporization is given to you. So methanol ka delta H vaporization is your, methanol ka delta H vaporization is what? It is 38.0 kilojoules per mole. इसका मतलब हमें बताना है 15.8 ग्राम्स के लिए ये कितना ग्राम्स है, मतलब 1 मोल के लिए इट इज 38.0 kilojoules per mole. So what is the you find out the molar mass of this. It, what is carbon? 12. What is oxygen? 16. What is your hydrogen? 4 in all. 3 और 1 4. So it will be 20 plus 32. So that means 32 grams require 38 kilojoules. 38,000 joules. जैसे भी लिखना चाहो. 38 kilojoules. Let me keep it as this only. So therefore 1 gram would require 38 upon 32 kilojoules of energy, and we want it for 15.8. अब options check करो. Options are way off from each other, so it can be 38 upon 32 into almost 16 ही हो गया 15.8. So it will be around say 19 kilojoules. अगर इसको मैं 16 मान लूं, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है. 16 1 जा, 16 2 जा, 2 1 जा, 2 19 जा. 19 के पास कौन सा आंसर है? 18.8 kilojoules. So the answer is B. Next question. What is delta H for the following reaction? What is the delta H for this reaction? What is the delta H for this reaction? Ask me to move on to the next question if you do not know. Will you be making guesses for such a question? If you do not know, move on to the next question. That is why I have put such questions here. नहीं आता उसको आगे बढ़ना भी सीखना है. ये नहीं कि ओहो अटक गए किसी क्वेश्चन में और उसमें 1-2 मिनट वेस्ट कर रहे हो. Each and every second is really precious. The answer by default, I mean, is, which has been found experimentally, is A. But even I cannot memorize the value. जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, कोई आपका फंडा नहीं लगेगा, कोई थर्मोकेमिस्ट्री का कुछ पैरामीटर नहीं गिवन, you cannot make a guess. So please ask me also not to waste your time. We'll move on to the next question straight away. और उसको मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है. Which of the following statements is true? Now in an endothermic process, heat is transferred from the surroundings to the system. पर एक बार बाकियों पे भी नजर मार लो. Don't be partial. A is the correct option. बाकी चेक कर लो, गलत है गलत है गलत है, तो फिर हम आगे बढ़ें. A ही करेक्ट है, बाकी सब गलत है. मैं नहीं पढ़ूं. I should not waste my energy. Next question. The enthalpy change for the reaction is minus ये वाली reaction H2 plus Cl2 giving 2HCl is minus 184.6 kilojoules. What is the standard enthalpy of formation for HCl? Decide कर लो C या D. सबसे पहले तो ये डेल्टा एच इस रिएक्शन का गिवन है. हीट ऑफ फॉर्मेशन मुझे 1 मोल के लिए निकालनी है. 1 मोल के लिए निकालनी है तो क्लियरली मुझे डिवाइड बाय 2 करना है. डिवाइड बाय 2 कहाँ गया वो वैल्यू? इसको डिवाइड बाय 2 विल बी 92.3 माइनस 92.3 है. HCl राइट में, मुझे HCl राइट में ही चाहिए. सो द ऑप्शन इज सी. बहुत समझदार लोग थे जिन्होंने उल्टा कर दिया. दोबारा से करने की जरूरत नहीं थी. ओके Okay, मेरा रह जाएगा, but anyways, I'll go slow for this question. The enthalpy change for the following reaction H2 plus Cl2 giving 2HCl is given. ठीक है, 2HCl मतलब 2 मोल्स के लिए. 2 मोल्स के लिए कितना enthalpy change है? minus 184.6. What is the standard enthalpy of formation for HCl? HCl मतलब 1 मोल के लिए निकालनी है. अब 2 मोल्स के लिए मेरी minus 184.6 है, तो 1 मोल के लिए कितनी होगी? minus 184.6 divided by
2, उसको करेंगे तो 2 1 जा 2 9 जा 2.3, so it will be minus 92.3 किलो जूल्स. HCl यहाँ पे भी राइट में है, यहाँ पे भी मुझे फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है तो वहां पे भी राइट में ही है, मुझे कोई साइन नहीं चेंज करना. सो द ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate the delta H for the following reactions using the bond energies. Start solving. सब देखते ही रह जाते हो. Calculate the delta H for the following reaction using the bond energies given below. HH की the plus II is giving 2HI. Bond energy of HH is given as 436. II is given as 151 and HI is given as 297. पहले बताओ डेल्टा H जब इसका निकालोगे तो in this case delta H will be equal to bond energy of reactants minus that of products. इसमें any doubts? कोई शक? So then in that case it will be bond energy of the reactants minus products. Reactant मेरा एक ही HH bond है तो 436 plus एक ही II bond है plus 151 minus दो HI bonds हैं तो 2 into 297. So this plus this minus twice of 297 and the answer is minus 7 kilojoules is the correct answer. This is what I calculated and I personally feel it is correct. Till all of you all say no, it is wrong. Okay, so the D is the correct answer, minus 7 kilojoules. Speed is fine. Next question. Which of the following processes is exothermic? अब ये इतना हमने water कर लिया तो I think this question, let me tell you, related to water always comes in one or the other form. सिर्फ इतना याद रखना कि solid से liquid और liquid से vapor convert होते time the reaction is always endothermic. ठीक है? और solid से liquid मतलब it's melting and liquid से vapor matlab it's vaporization happening. So here in this case the answer would be C. क्योंकि बाकी सब में endo हो रहा है, solid से liquid, liquid से vapor. अब vapor से जब वापस आ रहा है तो it is condensing, so that will be exothermic. So that is why the answer is C. Next question. Which process involves the largest difference in the heat content between the reactants and the products? 29th question. Which process involves the largest difference in heat content between the reactants and the products? Heat content बताना है. अब आपको पता है कि जब हम solid से liquid और फिर लिक्विड से गैस में जाते हैं तो ज्यादा एंडोथर्मिक किसमें होता है? सॉलिड से लिक्विड में मैंने बोला था थोड़ा एंडोथर्मिक, लिक्विड से वेपर में हाईली एंडोथर्मिक, सो वेपर से लिक्विड में हाईली एक्सोथर्मिक एंड सो ऑन फॉर दैट विल बी एक्सोथर्मिक. सो इस केस में सिर्फ हम उसी को एक एग्जांपल मान के यहाँ पे गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू लिक्विड, सो दिस वुड बी लाइक gas to liquid will be exothermic. So here in this case for the 29th question we have gas to solid would be highly exothermic. Gas to liquid exothermic hai, gas to solid would be highly, because how many phase changes are happening all of a sudden? 2, and without any kind of an intermediate stage. So remember, in cases of sublimation the reaction will always have Which process involves the largest difference in heat content between reactants and products? Solid से liquid जाते time हमारा reaction endothermic होता है generally, for we had taken the example of water. Liquid से vapor में जाते time again it is highly endothermic. So वापस आते time it will be exothermic. So vapor से liquid आएंगे it will be highly exothermic.
और वेपर से अगर डायरेक्ट सॉलिड में जंप मारेगा तो it will be even more energy difference. So the maximum energy difference would be where there is a sudden phase change. बाकी सब में एक एक phase का change है. Gas to liquid, liquid to gas, liquid to solid. सिर्फ यहाँ पे this is like the reverse of sublimation. So this would be the case. B. What quantity of heat is evolved with 5.55 moles of water? If with 5.55 moles water is formed from the combustion of H2 and O2. Remember, when 1 mole is getting formed, it is this much amount of energy. When 5.55 moles is formed, it will be this multiplied by 5.55. And clearly this is around 300. ठीक है, 300 multiplied by 5 would be around 1500. So C. You can move your hands on paper, but simultaneously keep thinking. And if I go slower than this, then the purpose of solving your entrance examination question goes off. So you all have to learn how to be a bit quick. Okay? I am being slow so that you understand, but make sure that you maintain the speed in the exam. Okay? So now I repeat this question one last time. What quantity of heat is evolved with 5.55 mole of water, which is formed from the combustion of H2? Combustion of H2 मतलब H2 का reaction with O2. यहाँ पे clearly reaction में I see that only 1 mole is getting formed. 1 mole getting formed means my delta H for 1 mole is this. I have to tell the delta H for how many moles? 5.55 moles. Look at the options. 51, 285, 1500, 2200, 2300 के आसपास. Right? So the options are way off. So that means I can actually round off. How can I round off? इसको 300 मान के चलो. 1 मोल के लिए 300, तो 5 मोल के लिए around 1500. Clear? Next question. Question number 29. Which process involves the largest difference in heat content between reactants and the products? हीट डिफरेंस आएगा जब भी हम सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे और लिक्विड से गैस में जाएंगे. Okay, now for water we had seen that when we move from solid to liquid, the reaction is little bit of endothermic. When we move from liquid to gas, the reaction is highly endothermic. तो इसका मतलब इनमें phase delta H is changing, but when we move from solid to gas, तो delta H कितना change होगा? 1 step plus 2 step, right? और वेपर से वापस लिक्विड में आएंगे तब भी उतना ही चेंज होगा. बाकी सब ऑप्शंस में सिर्फ सिंगल स्टेप चेंज है. गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस 1 स्टेप, लिक्विड टू सॉलिड. इसके अंदर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्टेप्स. दैट मींस यू हैव द मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस इन केस फ्रॉम गैस टू सॉलिड, क्योंकि ये स्टेप वाइज भी हो सकता है रिएक्शन. कैसे? H2 गैस से H2 लिक्विड, H2 लिक्विड से H2 सॉलिड. तो इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस वुड बी इन्वॉल्व्ड. As energy is added to a substance, the temperature remains constant. How may the substance be changing? As energy is added to a substance, the temperature remains constant. How may the substance be changing? मतलब energy is added means it is what kind of a process? Endo या exo? Endo. Endo किस में होता है? अभी मैंने रिपीट करा. Solid से liquid और liquid से gas. So from a gas to a solid, वो तो हाईली एनर्जी डिफरेंस पीछे वाले क्वेश्चन में था. लिक्विड टू गैस हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड बी. ओके, नेक्स्ट.
The addition of 9.54 kilojoules of heat is required to raise the temperature of 225 grams. Again, this is based on the heat capacity. Solve it quickly. Yes, ma'am. नहीं, जितना एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना you will get the gist of it. सारे 100 क्वेश्चंस ले लो मेरे से अभी. मैं दे दूंगी लेक्चर के बाद. मैं सेंटर लेक्चर के बाद दे दूंगी. खत्म होने पर. The addition of 9.4 kilojoules of heat is required to raise the temperature of 225 grams of a liquid hydrocarbon from 20.5 to 45 degrees Celsius. What is the heat capacity of this hydrocarbon? This is again Q is equal to MC delta T. Delta T is given to you as 45 minus 20.5, right? And M is given to you as 225 and your Q is given as 9.54 kilojoules. Direct question था, इसमें कुछ करना ही नहीं था. अभी तक आपने आंसर निकाल लिया होगा. आंसर is 1.73 joules per gram per degree Celsius. Okay, work this question out. Question number 33. This is calculate the standard enthalpy change delta H for the formation of 1 mole of strontium carbonate. इसको सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ना होता है. So 1 mole of strontium carbonate, the material that gives the red color in fireworks, उसका हमें क्या करना है? सिर्फ ये ऐसे ही टाइम वेस्ट करवाने के लिए लिखा होता है from its elements. So now we have to find out the delta H for this reaction. Reaction is given strontium plus carbon. अगर in case ये clear नहीं है तो strontium plus carbon plus 3/2 of O2 is giving strontium carbonate SrCO3. ठीक है. उसके बाद you are given some 3 equations which are available and you have to arrive at this equation. देखो कि इन तीनों equations को कैसे rearrange करोगे तो first equation आएगी. You want strontium तो पहली equation को as it is रहने दो. You want carbon also तो third equation को भी as it is रहने दो. Then you want 3/2 of O2. अगर हम first और third को add करते हैं, first और third को add करेंगे तो it will be 3/2 only. So that means 1 plus 2 can be 1 plus 3 can be added. अच्छा 1 plus 3 अगर add करेंगे तो मुझे strontium carbonate right hand side में ही चाहिए. तो यहाँ पे strontium carbonate सिर्फ right में यहीं पे ही है. तो 1 plus 3 plus 2 करके देखो. Got the point? कैसे ढूंढोगे? What is the trick for finding out? Look carefully again. This question is clearly an application of Hess's law of constant heat summation. जहां पे मुझे डेल्टा H बताना है इस रिएक्शन का. Strontium plus carbon plus 3/2 O2 giving strontium carbonate. ठीक है. इस क्वेश्चन का मुझे बताना है. अब मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 3 इक्वेशंस की. इन तीनों इक्वेशंस के लिए डेल्टा H is given simultaneously 592, 234 and 394 respectively. मैं ऊपर जो इक्वेशन अटेन करनी है, दिस इज माय टारगेट इक्वेशन. इस पे पहुंचना है. इसमें मुझे स्ट्रॉन्शियम चाहिए. इसमें स्ट्रॉन्शियम है, पहले मैं इसको इंटैक्ट रखती हूँ. ठीक है. फिर मुझे कार्बन ग्रेफाइट चाहिए, वो थर्ड वाले में इंटैक्ट है. तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कराऊंगी तो एटलीस्ट मेरा ये इतना पोर्शन आ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट और थर्ड को ऐड कराते हैं तो इट विल बी स्ट्रॉन्शियम प्लस कार्बन प्लस 3/2 O2 गिविंग CO2 प्लस SRO. ये तो क्लियर हो गया. चलो फिर उसके बाद इन दोनों को साइमल्टेनियसली ऐड करेंगे. इनको ऐड करेंगे. उसके बाद अब मुझे और क्या चाहिए? स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट अभी भी चाहिए. तो स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट राइट हैंड साइड में इसमें भी है और मुझे यहाँ पे राइट में ही चाहिए. तो मैं अपनी जो इन दोनों को ऐड करके इक्वेशन थी उसमें सेकेंड इक्वेशन ऐड कर देती हूँ. सो इसका मतलब 1 plus 2 plus 3 जब मैं कर रही हूँ तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा. SRO कैंसिल हो जाएगा. So what will I be left with is only this equation. So this was one of the simplest numerical that you could have done using Hess's law. So in this case, what do we have? You add 1 plus 2 plus 3. So in this case, add all the 3. So you get the final answer as minus 1220 kilojoules. Let me just check because I didn't solve it right now. Yes.
You add all the three, what you get is -1220. Any doubts to anyone? Because then we'll move on to complicated problems of Hess's law. ये तो simple था, simply तीनों को add करा, ये equation मिल गई. Now we'll move on to our next question. The combination of coke and steam produces a mixture called cold gas. ये चाहिए information. Which can be used as a fuel or as a starting material. So if I'm going fast for that portion which is not really very important. As a fuel or as a starting material for other reactions. If we assume coke can be represented by graphite, the equation can be production of coal gas using this equation. अब मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मैं सीधा टारगेट इक्वेशन पे देखूं. तो 2C plus 2 water is giving me methane plus carbon dioxide. This is my target equation. Information given है इन सब की. तो मुझे इन तीनों को rearrange करके I need to get my equation number this. The target equation. अब जैसे जैसे इनमें चेंज करेंगे वैसे वैसे हम इसमें भी करेंगे. सबसे पहले I need 2C. कार्बन कहाँ पे है? So multiply this with 2. Multiply this with 2. आप एंट्रेंस एग्जाम में ये सॉल्व करने अच्छे से, मतलब ये सिर्फ रफली करके देखोगे, मेन तो आपको ये ठीक से करना है, बिकॉज व्हाट यू वांट इज द वैल्यू. सो ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 1. फिर मुझे और क्या चाहिए? वाटर, ट्वाइस वाटर. सो इसको मैंने ट्वाइस अभी करा था, बट देन आई वांट, what else do I want here? In this particular case, I want now I want methane on the right hand side. So it can be twice of this minus equation number 3. ठीक है? तो twice of this minus equation number 3. मैं सिर्फ methodology बता रही हूँ of thinking. जब आप twice of this करके minus third equation करोगे तो आपका methane भी right hand side पे आ गया. And now you will have 2H2O minus H2O. So ये एक ही H2O बच जाएगा. ठीक है? I hope you all are doing it simultaneously. ठीक है? So twice of equation number 1. अभी तक मैंने करा है minus equation number 3. Values please देख लेना. So twice of equation number 1 minus equation 3. उस केस में मेरा resulting equation होगा 2C plus H2O minus CH4 giving CO plus H2 minus 3H2 plus minus CO. So CO gets cancelled and what you are left with on the right hand side is only 2H2. अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? I need to cancel the H2 also and I need to get my CO2 also. So I can simply add the second equation to the third and get the answer. Do you want me to solve it? Now I'll just write down what did we actually do for this question. This is question number 34, right? In question number 34, our target equation is we want 2C plus 2 water giving 2 water is giving methane plus carbon dioxide. ये हमारी target equation है. अब हमें बाकी की 3 equations को rearrange करना है so that we get this target equation easily. So that I have achieved by multiplying the first equation. I'm putting the equations in circles, okay? By multiplying the first equation with 2 plus equation number 2 minus equation number 3. This will give me the answer. So accordingly, मेरा जो delta H होगा for this reaction, that will be equal to twice of 131.3 plus minus of 41.2 minus 206.1. Done? और इसको आप molecules और equations के साथ करके देखोगे तो it will be your target equation only. So in this particular case, the answer is coming out to be 15.3 kilojoules. One reaction involved in the conversion of iron ore. Now this is like not that easy. हमने जो
Can we move on to 33rd question once? हमने अभी दो हेसेस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है? ये वाले तो बहुत ही इजी टाइप्स हैं. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. 1 plus 2 plus 3 किया था हमने. We got the answer for this equation, right? This was rearrangement, but simple rearrangement. Next question में हमने देखा कि हमें थोड़ा सा rearrange करना पड़ा. In the previous question as we did, it was पहले को 2 से multiply करा, फिर दूसरे को हमने इंटैक्ट रख के उसको एज इट इज ऐड करा, एंड देन थर्ड इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करा. So there was still some rearrangement. Now the next third question in series for Hess's law requires some attention of yours. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को. हमारा टारगेट इक्वेशन है FeO plus CO giving Fe plus CO2. And you have to rearrange equation number 1, equation number 2, and the equation number 3 in such a fashion that you get the target equation easily. And it is not that simple a process. इस केस में इतना डायरेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा. अपने आप इंडिविजुअली सोचोगे तो ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे. इस केस में सबसे पहले लुक एट द थर्ड इक्वेशन, क्योंकि मेरा सबसे पहले मैं FeO ढूंढूंगी, ठीक है? अगर मैं FeO ढूंढती हूं तो सबसे पहले आई नीड टू लुक इनटू दिस थर्ड वन. या तो मैं इसको 1/3 करूं, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे मॉलिक्यूल सारे 1/3 1/3. सो व्हाट विल आई डू इज लेट मी टेक अ सिंपल होल नंबर रेशियो, क्योंकि आई वांट CO आल्सो टू बी देयर, I want Fe also, and I want CO2 also, right? So let us multiply this equation with say 2. Multiply the third equation. Check करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा. Multiply the third equation with 2, and if I multiply it with 2, and then if I add it to equation number 1, okay, multiply equation number 3 and add it to equation number 1, and let that delta H be associated with say an equation number, जो नई अब equation form होगी, name it equation number 4. Okay, what will be the equation? Let me just put it. Twice of equation number 3 would be 3Fe3O4. Sorry, it will be 2Fe3O4. Acha, why did I multiply with 2? Look here. Why did I multiply it with 2 in the first go? इधर अगर ध्यान से देखोगे तो मेरा कहीं इक्वेशन में Fe3O4 है, कहीं Fe3O4 है नहीं. इसका मतलब I need to get rid of Fe3O4 also. तो यहाँ पे 2Fe3O4 है, मेरे पास कोई क्लू नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा. तो 2Fe3O4 हटाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरा एटलीस्ट 2Fe3O4 इसको ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा. Got the point? So I have multiplied the third equation with 2 to get 2Fe3O4. Tell me what will be next. Plus 2CO is giving me 6FeO plus 2CO2. This is what we are getting, right? And I am asking you to add this to simply equation number 1, which is 3Fe2O3 plus CO is giving us 2Fe3O4 plus CO2, right? This is what we are getting, and you add, and this will be twice of 19 minus 47 kilojoules, right? This is for your delta H, क्योंकि delta H भी तो साथ के साथ आप करते जाओगे. अब इस केस में जब मैं ऐड कर देती हूँ तो I know my Fe3O4 is getting cancelled, so I'm not writing it down. क्योंकि जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा Fe3O4 2 इधर है, 2 इधर है. So what am I left with? 3Fe2O3 plus 3CO
is giving 2 Fe3O4 तो कट गया. So what I have is 6 FeO plus 3 CO2. This will be my minus 9 kilojoules. Let this be equation number 4. ठीक है. अब मेरे पास ये इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन मैंने अभी तक यूज नहीं करी है. So second equation में I have Fe2O3 and here also I have Fe2O3. But do I have Fe2O3 in the final equation? No. So that means I need to get rid of it. इस केस में I can divide this equation by 3. So I can divide this equation number 4 by 3 and then you can have minus Fe2 minus equation number 2, right? Or what you can do is you can always also take equation number 2 minus equation number 3 because I want my COs to be intact. अगर मैं इसको divide by 3 कर देती हूँ तो इस केस में I will have 1 CO here. I want a positive CO on in my target equation. So in that case, I can have half of और डायरेक्ट भी कर सकते हो, half of equation number 2 minus 1/6 of equation number 4. This is what I can make out just now. Half of equation number 2. Look at equation number 2. उसको half करो. Minus 1/6 of equation number 4. That should give you the target equation, which is nothing but FeO plus CO is giving Fe plus CO2 plus CO2. ठीक है? Is not coming? Answer is, and you do the same with your delta H's also, so the answer will be A, minus 11. Clear? So for Hess's law, for some questions you need some time also. जब प्रैक्टिस होगी तो हो सकता है इस पे 2 से 3 मिनट भी लग जाएं, पर वो तभी यूज कर सकते हो जब बाकी क्वेश्चंस में आपने अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करा है. ठीक है? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन वन लास्ट टाइम. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं था, बट कहीं ना कहीं से आपको यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द पजल. उस पजल को सॉल्व करने के लिए हमने कहाँ से स्टार्ट करा? हमें एफईओ कहीं सिंगल नजर नहीं आ रहा. अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 1/3 हो जाएंगे, तो मेरे आगे जाकर इक्वेशंस में फिर फ्रैक्शंस में मॉलिक्यूल्स चलते जाएंगे. आई डोंट वांट दैट प्रॉब्लम. सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट. मुझे Fe3O4 दिख रहा है, मुझे Fe2O3 दिख रहा है. दे आर नॉट देयर इन माई इक्वेशन. टारगेट इक्वेशन में Fe2O3 नहीं है, Fe3O4 नहीं है. तो लेट मी जस्ट वर्क टू एलिमिनेट द मॉलिक्यूल्स नाउ. वो वाले कंपाउंड्स को निकाल देते हैं जो हमारी टारगेट इक्वेशन में नहीं है. कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 2Fe3O4 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बी 2Fe3O4 प्लस CO प्लस 2CO प्लस 6FeO प्लस 2CO2. अगर मैं इसको ऐड करूंगी तो LHS RHS में आके मेरा Fe3O4 चला जाएगा. वो गया. उसके बाद उन दोनों का जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगा उसमें से सोचना है कि अब मुझे कैसे Fe2O3 को एलिमिनेट करना है. और एलिमिनेट Fe2O3 को करेंगे, देन इन दैट प्रोसेस we'll come at the final expression, that is FeO plus CO is giving Fe plus CO2. Clear? So in this particular case we have this as the final expression. So this is our methodology that we followed. Twice of equation number 3 plus equation number 1, उसको हमने नेम करा equation number 4, right? Once we did that, फिर हमने equation number 4 का 1/6 लेके उसे half of 2 में से माइनस कर दिया. We subtracted 1/6 of 4 from half of the second equation. Clear?
Can we move on to the next question? Do it on your own quickly. This is like a simple one. This is again similar to your Hess's law only, or you can relate it directly to the question that we're doing. From the following, H2 plus half O2 is giving water. H2 plus half O2 is giving water. पहले केस में gaseous state में, second case में liquid state में. So we have to find out H2O liquid getting converted to H2O gas. So simply it will be the delta H for this reaction would be liquid minus gas should be 1 minus 2. ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी करा भी है 57.0 plus minus of minus, right? Minus of minus 68.3. So that will be, क्योंकि this will be delta H of equation number 1 minus delta H of equation number 2. What is this turning out to be equal to? This is plus 11.3. This is for 18 grams of water. 1 mole of water का क्या मतलब है? 18 grams of water. पूछा किसके लिए हुआ है? 1 gram के लिए. So 1 gram के लिए it will be 11.3 divided by 18 and that will be equal to your 0.628. Any doubts to anyone? Okay, next question. First law of thermodynamics is represented as sure. Next, pumping of water uphill. Pumping of water uphill is what? Non-spontaneous process. क्योंकि अब इसमें हमने अभी डिस्कस नहीं करा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच टॉक्स अबाउट स्पॉन्टेनिटी. स्पॉन्टेनिटी कोई भी चीज होती है जो अपने आप से हो जाती है. जैसे कहते नहीं है प्लीज आंसर स्पॉन्टेनियसली, मतलब जो भी दिमाग में आए सबसे पहले वही सबसे पहले निकाल दो. सो स्पॉन्टेनियसली मतलब जो अपने आप से हो रही है, इट जस्ट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन. स्पॉन्टेनियस जो भी हो रहा है उस सब चीजों को हम स्पॉन्टेनिटी कहते हैं. I mean, if anything is happening, we say that this is spontaneous in nature. If I'm moving my hands, that means this motion is spontaneous. All right. If I'm talking to you, it is spontaneous because it is happening. अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो हम कहेंगे कि the reaction is spontaneous. लेकिन pumping of water अपने आप होगा नहीं, तो हमें उसे करना पड़ेगा. We'll have to supply energy to do that. So that is a non-spontaneous. You cannot say anything about exothermicity or endothermicity जब तक हम उसके साथ कोई रिएक्शन को एसोसिएट नहीं करेंगे. Okay, now carry out this question quickly. Calculate the standard enthalpy of combustion of methane given that the standard enthalpies of formation of carbon dioxide, water and methane are, their values are given to you. Standard enthalpy of combustion of methane का आपको सबसे पहले क्या करना है? Reaction लिखना है. What is the reaction for this? You will have CH4 plus O2 is giving you CO2 plus 2H2O. ठीक है? So in this case, very clearly, this is in gaseous state. Please look up here on the board. Now, this is the equation that you are looking for in this numerical. Calculate the standard enthalpy of combustion of methane. तो सबसे पहले combustion of methane की reaction लिख दो. इसके अंदर my delta H will be delta H of CO2, heat of formation of carbon dioxide, plus twice of delta H of water minus delta H of
मीथेन minus twice of delta H of O2. अब आपको पता है O2 is in its most stable form, elemental form in the standard temperature pressure condition, so this will be equal to 0. ये वैल्यू आपको गिवन है मीथेन की. ट्वाइस हमने इसलिए किया है इसको यहाँ पे क्योंकि यू हैव 2 moles of water and this is your HP products and this is your HR. समझ में आया? सो HP माइनस HR. अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इज गिवन एज माइनस 393.4. वाटर की वैल्यू इज गिवन एज 285.8. माइनस ऑफ दैट माइनस ऑफ 74.9. So just solve this and get the answer. Do it quickly. I repeat, all you have to do is delta H of CO2 plus twice of delta H of water minus delta H of methane. Value सारी given है, सिर्फ value substitute करनी है और आंसर निकालना है. Answer is A minus 890.2. Okay. Now again another question now. Calculate the enthalpy of formation of methane. अब इधर again जैसे ही कोई भी रिएक्शन पूछिए सबसे पहले अपनी टारगेट इक्वेशन बना के रख लो कि हमें किस इक्वेशन का डेल्टा एच निकालना है. अगर इस क्वेश्चन में है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब C plus 2H2 is giving methane. Remember what is enthalpy of formation? It is the enthalpy involved, released or absorbed when 1 mole of a substance is formed. So we have to find out the enthalpy of formation of methane from the following data. So look at the data now. हमें दे रखा है C plus 2H2 is giving methane. This is what we have to find out. And we are given the data. And now just rearrange this equation such that they get cancelled. So in this question, multiply the second equation, label them as equation number 1, equation number 2, equation number 3. ठीक है? अब क्या करो? Second equation को multiply it with 2 and then add it to equation number 1. And then उनमें से थर्ड इक्वेशन को माइनस कर लो. Okay, that means first equation plus twice of second equation minus the third equation should give you the answer. और इसको करके भी देखो एक बार अपने लिए. C plus O2 हमें क्योंकि कार्बन लेफ्ट में चाहिए तो मैं उसको नहीं छेड़ रही हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने एज इट इज रहने दिया. फिर मुझे 2H2 चाहिए, तो 2H2 कहाँ पे है मेरा? सेकेंड इक्वेशन में है, तो इसको 2H2 बनाने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. सो व्हाट डू आई गेट? C plus 2H2 plus 3/2 O2 is giving me CO2 plus 2H2O. ये इक्वेशन आ गई. उस इक्वेशन में से Now I want methane on the right hand side. लेकिन यहाँ पे मीथेन लेफ्ट में है, तो जो भी इन दोनों को जो भी अभी हमने किया रिजल्टेंट इक्वेशन में से हम थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो मीथेन वुड कम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन फाइनली मूव ऑन टू द राइट, एंड आई एम श्योर बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाती हैं. ठीक है? आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन. आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन. व्हाट इज इट? What we have here is carbon plus oxygen giving carbon dioxide, H2 plus half O2 giving water. हमारी टारगेट इक्वेशन है C plus 2H2 giving methane. C plus 2H2 giving methane. ये हमने निकालनी है. अब हम देखेंगे हमें कैसे C और 2H2 लाना है. पहले लेफ्ट हैंड साइड में C ऑलरेडी देयर, इसको एज इट इज रहने देते हैं. प्लस 2H2 चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर 2.
मीथेन राइट में चाहिए तो -3 करके देखते हैं, नहीं सॉल्व होगा तो वील फाइंड आउट सम अदर वे. -3 करके देखेंगे, देन वील गेट द आंसर एंड देन फाइनली यू गेट द आंसर एज -74.9 किलो जूल्स, क्योंकि साइमल्टेनियसली आप इनमें भी चेंजेस करोगे. एनी डाउट्स? Calculate the enthalpy of formation of carbon monoxide from the following data. जल्दी करो. Enthalpy of formation of carbon monoxide का मतलब सिंपल है कि आपको 1 मोल ऑफ CO बनाना है अब बस. Very simple. Just look into it and tell me how will you solve it. This is CO2. CO2 मुझे चाहिए ही नहीं. What is my target equation? मुझे बताना है enthalpy of formation of carbon monoxide. मुझे 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड का चाहिए इस साइड पे. इस साइड पे I have carbon plus half O2. क्यों मैं इसको half O2 ले रही हूँ? Simply because the heat of formation is the energy, the enthalpy released or absorbed for the formation of 1 mole of a substance. तो 1 मोल हमारा कैसे बनेगा? देखो अब इन दोनों इक्वेशन से कार्बन डाइऑक्साइड मुझे चाहिए ही नहीं, सो आई कैन इजीली सब्ट्रैक्ट द 2 इक्वेशंस. बट सीओ मुझे कहाँ चाहिए? राइट में. सीओ मुझे राइट में चाहिए, तो इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 -2 करेंगे तो आई थिंक इट विल गिव मी द आंसर. इक्वेशन नंबर 1 इज C plus O2 गिविंग CO2. तो रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगी? C plus O2 minus CO. O2 minus half O2 will be half O2. So the resultant on the left hand side will be C plus half O2 plus C minus CO will give me 0. Minus CO को right hand side में ले जाएंगे. So I will get C plus half O2 giving CO. And so that means I simply take the difference of these two equations and it will be minus 393.7 minus of 282.8. Minus of minus means plus 282.8. So what is the answer? 110 point. So then in that case you get close to the whichever value. अगर 110.5, 110.9 दे रखा होता, then you could have marked it. In that case, you can easily go in for option number A, because I mean some percentage error is kind of allowed even in your calculations. So in that case, you will actually come down to, because sometimes these values also have discrepancies in the nature of what it is given. So the answer is A. Calculate the enthalpy change accompanying the transformation. ये साथ के साथ लिख लो. हमें किस चीज का enthalpy change निकालना है? हमें enthalpy change निकालना है. Now this is question number 42 now. In this case हमें enthalpy change निकालना है. C graphite getting converted to C diamond. यही है question में. हमें इसका delta H बताना है. So this is our target equation. But we are given that the enthalpies of combustion of graphite and diamond are given to you. Enthalpy of combustion of graphite मतलब जब मेरा C graphite, combustion means what? Combines with O2 to give you CO2 gas. Then in that case, I get delta H value as, what is the enthalpy of combustion of graphite? 393.5. One thing that you have to take care of, it is not given as minus 393.5 here, but combustions are always exothermic reaction. तो अपनी common sense use करके यहाँ पे you have to put a minus sign on your own. Enthalpy of combustion is always exothermic. Okay, and then you are also given the enthalpy of combustion of diamond. So carbon diamond plus combustion मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, that is carbon dioxide gas
Delta H for this reaction is minus 395.4 kilojoules per mole. Both of the values are in kilojoules per mole. अब इस केस में मेरा टारगेट इक्वेशन है C graphite to C diamond and I have this equation given combustion of graphite का delta H. I am given combustion of diamond का delta H. So I want equation number 1 minus equation number 2. Simple. Answer. Answer very simple. The difference of just these two, it will be 1 minus 2. So the answer will be plus. So the answer is A, that is plus 1.9 kilojoules. Okay. And remember that the enthalpy of transformation is the enthalpy change involved. That means the heat released or absorbed when 1 mole of a substance changes from one form to another. ऐसे बहुत सारी definitions हैं जो आप खुद भी बना सकते हो. I mean, सोच सकते हो और apply कर सकते हो. जैसे अब इस case में we have enthalpy of hydration. Enthalpy of hydration is when 1 mole of a substance is getting hydrated. So it is the heat change involved. Heat change matlab either absorbed or released when 1 mole is getting hydrated. So this is that type of a question now. So I have picked up from each enthalpy one question from each type. So check up, calculate the enthalpy of hydration of copper sulfate. Enthalpy of hydration of copper sulfate. So what we have is, we are given the enthalpies of solution of anhydrous copper sulfate. Start working it out. What we basically want is, we are given कि copper sulfate anhydrous is given. So that means solid. Iska hydration means that I am adding an aqueous phase to it. Please read the question carefully now again here. Calculate the enthalpy of hydration of anhydrous copper sulfate into hydrated copper sulfate. That means I want basically the equation of anhydrous copper sulfate means CuSO4 getting converted to CuSO4 dot 5H2O. That is from anhydrous to मुझे delta H उस reaction का निकालना है. What am I given? The enthalpy of solution of anhydrous. So enthalpy of solution मतलब जब मैं copper sulfate solid को solvate करा रहे हैं, तो what we get is this, and the delta H for this is given in the question as minus 66.5, right? Then we have CuSO4 dot 5H2O. We are given the enthalpy of solution of hydrated copper sulfate also. तो इसको इस solid को जब मैं solvate करा रही हूँ, the enthalpy of solution that I get will be CuSO4 dot 5H2O. So delta H for this would be plus 11.7. This is what is given in the question. Read the question again. Given the enthalpies of solution of anhydrous. So anhydrous हो गया हमारा copper sulfate, hydrated हो गया copper sulfate dot 5H2O. इन दोनों का enthalpy of solution दे रखा है. What is enthalpy of solution? इस solid को लेके मैंने water में डाल दिया. I mean generally aqueous media is water is taken as the universal solvent here. So when we get this, the delta H for this reaction is given. Then the second part of it states that hydrated copper sulfate का जब solvate कराएंगे तब delta H is equal to this. And what we need to find out, we aim to find out CuSO4 solid. This is our target equation. Target equation मतलब हमें निकालना है the enthalpy of hydration. So enthalpy of hydration मतलब ये हमारा normal copper sulfate है. इसमें हमने hydration करानी है. So that means I need to add water to get CuSO4 dot 5H2O solid. इसका delta H बताना है. अब बता सकते हो आप?
नो बट देन हम इसके अंदर लिक्विड डाल के इसको हाइड्रेट करके सॉलिड फॉर्म में ला रहे हैं। लेट मी टेल यू, when you will actually get to see it experimentally, जो anhydrous copper sulfate होता है that is white in color, और जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है दैट इज जनरली ब्लू इन कलर। और आपको व्हाइट बहुत कम देखने को मिलेगा क्योंकि कॉपर सल्फेट एज सच व्हेन इट इज केप्ट इन एयर इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर एंड फाइनली गेट्स हाइड्रेटेड। तो ये रिएक्शन तो इन नेचर हो ही रही है। वो क्या अब्सॉर्ब कर रहा है? लिक्विड वाटर, और क्या बन रहा है? solid form में copper sulfate dot 5H2O. So what we want is the enthalpy of hydration of anhydrous copper sulfate. तो हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताना है और हमें ये गिवन है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड ये है और इसका ये है। So now for this, what can we do is let this be equation number 1 and let this be equation number 2. For the solution, you can write CuSO4 solid let this delta H be equal to Q1, all right, and CuSO4 dot 5H2O solid plus aqueous giving CuSO4 aqueous. Here delta H, let this be equal to Q2. Equation number 2 and say equation number 4 are just the same. I've written down some equations on the board. पहली तीन तो क्वेश्चन से ही है। Enthalpy of solution of copper sulfate solid, enthalpy of solution of hydrated copper sulfate, ये तो absolutely clear है। ये वाली इक्वेशन मुझे निकालनी है। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं, where CuSO4 is giving me aqueous form of this, or say let solid form, let this be Q only. This can be written in two steps. Say now CuSO4 dot 5H2O plus S giving copper sulfate. This first equation, इसको ध्यान से देखो, तो इसमें मैंने 5H2O ऐड कराया, so I got this, then I got this plus aqueous is giving me CuSO4 aqueous. Please copy it down. Copied. So now this equation number 4 and 2 are just the same if you carefully look at them. Right? Equation number 4 is just as good as equation number 2. It is the same only. Fourth and second equation are the same. So here in this case, according to Hess's law, I can say that Q1 plus Q2 is equal to minus 66.5. And so from here, we get Q1 plus 11.7 to be equal to minus 66.5. And from here, you can calculate your Q1. That will turn out to be equal to minus 78.2. These are some of the complicated problems that generally puts you to thinking. Okay? Just write it down and read it again. We are given the enthalpy of hydration of anhydrous copper sulfate. So we know that enthalpy of solution of copper sulfate given, enthalpy of solution of hydrated copper sulfate given. इनकी values को हमने jot down कर लिया. What we are supposed to find out is the hydration in enthalpy factor for this equation. हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को स्प्लिट करके लिख दिया. फर्स्ट इक्वेशन को स्प्लिट करके लिखा, तो अगर ये दो स्टेप्स में भी होती है, to give you finally CuSO4 aqueous,
क्या है फर्स्ट इक्वेशन में? CuSO4 is solid is giving you CuSO4 aqueous. हमने इस इक्वेशन को दो स्टेप्स में लिख दिया by making use of Hess's law. दो इक्वेशंस में कैसे लिखा? CuSO4 plus 5H2O giving CuSO4 dot 5H2O. ये तो हमारी टारगेट इक्वेशन है, तो इसको हमने मान लिया Q1. उसके बाद this solid plus aqueous is giving me CuSO4 aqueous. Alright, क्योंकि सिर्फ इसी का aqueous फॉर्म ही तो बनाया है. So I have split the first equation into two equations. So that means these two equations का enthalpy change will be equal to the net enthalpy change, which is minus 66.5. इसमें से जो fourth equation है, it looks like the second equation only, right? So इसका enthalpy change will be plus 11.7, and we have just substituted and got our Q1, which was to be found as minus 78.2 kilojoules per mole. So this was like a bit complicated for you, but I hope you can get it. Just write it down carefully. How is the hydration enthalpy related to the ionic size? Generally, when you see the ionic size, you have smaller the ionic size, greater is the solvation power. When you have the smaller ion, it will have greater tendency to accumulate solvation ion. So when you relate the hydration energy to the ionic size, you can always say that they are inversely related. Smaller the size, greater will be the solvating power. How can we write CuSO4 dot 5H2O? CuSO4 dot 5H2O is the hydrated copper sulfate. All right, this is the hydrated copper sulfate that we generally get in the natural form. जो आपको normal copper sulfate मांगोगे भी ना, तो वो blue color का है, तो इसका मतलब वो CuSO4 dot 5H2O है. Next question. We're close to half century now. But I hope you're not tired. Even if you are. The enthalpy of combustion of ethyl alcohol is, करना शुरू करो इस question को. Write down the equations. You all know. Quickly do it. The enthalpy of combustion of ethyl alcohol is 1380.7 kilojoules per mole. Please look onto the screen. The question, the enthalpy of combustion of ethyl alcohol is 1380.7 kilojoules per mole. If the enthalpies of formation of carbon dioxide and water are given as 394.5 and 286.6 kilojoules per mole respectively, calculate the enthalpy of formation of ethyl alcohol. करो, okay नहीं, करो. जो चीजें गिवन है, टारगेट इक्वेशन लिखो. टारगेट इक्वेशन तो बहुत सिंपल है. आपको क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है? इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल लिखना फॉर्मूला आता है ना, C2H5OH. All right, CnH2n plus 1 OH. This will be our ethyl alcohol where N is equal to 2. तो इस केस में हमारा टारगेट इक्वेशन जिसका डेल्टा H निकालना है would be 2 कार्बन चाहिए, 3 H2 चाहिए और हाफ O2 चाहिए. ठीक है, डन. दिस इज आवर टारगेट इक्वेशन. क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, एंड टाइम एंड अगेन आई हैव बीन रिपीटिंग that what is our enthalpy of formation? Enthalpy of formation is the energy released or absorbed when 1 mole of a substance is getting formed from its elements. So 1 mole of a substance means यहाँ पे ethyl alcohol है C2H5OH. वो कैसे बनेगा? 2 कार्बन चाहिए, 3 H2 चाहिए, हाफ O2 चाहिए, and this will form our C2H5OH. अब जो given है, क्वेश्चन में से पढ़ते हैं, हमें given है enthalpy of combustion of ethyl alcohol. तो पहली इक्वेशन जो गिवन है C2H5OH
plus combustion 3 O2 ही लगा दो डायरेक्ट, मुझे इक्वेशन याद है, दैट इज 2 CO2 प्लस 3 H2O। ये बैलेंस कर लोगे। कंबशन का क्या मतलब है, एक मोल को जलाओगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सो C2H5OH प्लस 3O2 will give you 2 CO2 plus 3 H2O, और इसका डेल्टा H क्वेश्चन में गिवन है एज -1380.7 किलोजूल पर मोल। Alright, next is you are given the enthalpy of formation of carbon dioxide. Enthalpy of formation of carbon dioxide मतलब ये delta H is given as -394.5 kilojoules per mole, and then you are given the enthalpy of formation of water also. That is the third equation. H2 plus half O2 is giving you H2O. So delta H in this case is -286.6 kilojoules per mole. Right? These are the three equations which are given to you, and you have to tell the delta H for this reaction. करो। पहला फिर से क्वेश्चन में से पढ़ के बता रही हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालना है, मतलब ये डेल्टा एच निकालना है। गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ये रहा C2H5OH, कंबशन ये करवा दिया। क्या प्रोडक्ट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन यू गेट दिस ओनली। डेल्टा एच इज गिवन, साइमल्टेनियसली लिख लो। देन यू आर गिवन द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and you are given the heat of formation of water. दोनों का डेल्टा एच रिकॉर्ड करके रख लो। Now you just have to rearrange these to get this. Very clearly मुझे 2 कार्बन चाहिए तो सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड विथ 2, फिर 3H2 चाहिए तो थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाइड विथ 3, and then you want C2H5OH तो -1. I think this will give you the answer. इसको ट्राई भी करके देख लो। I repeat, 2 कार्बन चाहिए तो सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड विथ 2, सो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे साइमल्टेनियसली। देन प्लस थर्ड इक्वेशन H2 मल्टीप्लाइड विथ 3, इन दोनों को क्या करोगे, ऐड। इन दोनों को ऐड करोगे तो मुझे C2H5 राइट में चाहिए, तो फर्स्ट को क्या करोगे, इनमें से रिजल्टिंग इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट। यू शुड गेट द राइट आंसर। कैलकुलेट एंड फाइंड इट आउट एंड टेल मी। Answer is A in kilojoules per mole. Units are not mentioned here. -268.1. All of you all, I don't want the answer from 1 or 2 of you. करके देखो, नहीं भी दिल कर रहा तो भी ऐसे धीरे धीरे कर लो। I am going slow. सबसे पहले टारगेट इक्वेशन बना लो। टारगेट इक्वेशन क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। एक बार टारगेट इक्वेशन बना ली, फिर देखो कि क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सबसे सिंपल इक्वेशन है C plus O2 will give you CO2, and you have H2 plus half O2 giving H2O. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहीं पॉजिटिव दे रखी है, where is it? Formation for carbon dioxide in yes, and even for this is combustion will be negative, formation will be negative for carbon dioxide and water. Yes, combustion though, even if it is not given as negative, it is always negative. So the answer is A. Do you want me to repeat it? Anyone? Anyone? Next question. Calculate the enthalpy of formation of methane, given that the enthalpies of combustion of methane, graphite and hydrogen
Again enthalpies of combustion are given with a positive sign. तो ये सब क्या है? Negative. करो, जल्दी से करो. I will also do it on the board simultaneously and slowly. Calculate the enthalpy of formation of methane. तो हमें निकालना है enthalpy of formation of methane का मतलब है कि हमारी टारगेट इक्वेशन क्या है? C प्लस, बताओ, टेल मी. नहीं आ रही. I have been speaking. I should be slow. What will be the target equation? Enthalpy of formation of methane. सबसे simple है. C plus 2. Delta H is equal to question mark for this. Enthalpy of combustion of, now you are given methane. I'm sure सबने balance कर ली होगी. Will give you CO2 plus H2O. Enthalpy of combustion of graphite मतलब carbon. So C plus O2 is giving you CO2 again. And then you have for hydrogen, it is H2 plus half O2, that will give you H2O. क्योंकि इसके कंबशन के केस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसके कंबशन के केस में सिर्फ वाटर मिलेगा. प्लीज कोई भी ये बेवकूफी ना करें कि आप CO2 इधर लिख दें और H2O इधर लिख दें, बिकॉज कंबशन प्रोडक्ट्स आर ओनली टू. What are those? Carbon dioxide and water. So just see what is given where and then write it accordingly. So delta H for the first is a minus 890.2 kilojoules. Delta H for the second reaction is minus 393.4, and delta H for the third reaction is minus 285.7 kilojoules per mole. So solve it. 2H2 चाहिए तो थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो थर्ड 2H2 चाहिए ना, चाहिए. So 3. Thank you. So it will be CH4 plus 2O2 giving CO2 plus 2H2. It is very important. नहीं तो अगर बैलेंस नहीं होगी तो कहीं पे भी माइनस प्लस करते टाइम there would have been a problem and we would have got stuck and then would not have been able to cover up the half century that we are about to do. So what we have, equation number 3 को हमें क्या करना था? मल्टीप्लाई विथ 2, क्योंकि मुझे 2H2 चाहिए. एंड इसके अंदर इक्वेशन नंबर कौन सी ऐड कर दूं? कार्बन वाली, क्योंकि मुझे सिंगल कार्बन भी चाहिए. और फिर एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्टेंट फ्रॉम फर्स्ट और इन, आई मीन व्हाट डू यू डू? यू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम दिस वन, ताकि माइनस CH4 लेफ्ट में आएगा, उसको राइट में लेके चले जाएंगे एंड देन यू फाइंड आउट द आंसर अकॉर्डिंगली. एक बार ये सॉल्व हो गया कि कैसे इस तक पहुंचेंगे, फिर ये तो आप जल्दी 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 कर सकते हो. पक्का? Should I do it? So the answer is minus 74.6. Take up the next question. A tank contains 20 liters of compressed nitrogen at 10 atmosphere and 25 degrees Celsius. Calculate the work when, अब इसमें equations नजर नहीं आ रही तो ये Hess's law से break हो गया. So what we have is a tank contains 20 liters of compressed nitrogen at 10 atmosphere and 25 degrees Celsius. Calculate the work when the gas is allowed to expand reversibly and adiabatically. अब फॉर्मूले याद है? आज तो रिवीजन भी नहीं करवाई. सो एडियाबैटिकली का वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? एक वर्क डन का जनरल फॉर्मूला बताना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी बता रही हूँ. CV डेल्टा T. what was work done? डेल्टा U is equal to Q plus W. Q क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस में? 0. सो W क्या है मेरा? डेल्टा U. अब या तो डेल्टा U क्या है? CV इंटू NCV डेल्टा T. N भी आता है, N is the number of moles. So NCV into डेल्टा T. एक फॉर्मूला वो था.
एक फॉर्मूला था W is equal to minus of nRT into T2 minus T1 upon 1 minus gamma. Now look at the information which is given to you. I have given you enough, hence move on to do the question now. So what do we have here? A tank contains 20 liters. तो हमें volume given है, हमें pressure given है, temperature एक given है. Calculate the work done when the gas is allowed to expand adiabatically. हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया कि वर्क डन के हम दो फॉर्मूले एम्प्लॉय कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. We have been given the final temperature also. So what we have is work done is equal to NCV delta T, which is T2 minus T1. W is equal to NCV into T2 minus T1. Or what was the other formula that I just discussed? That was NR into T2 minus T1 upon 1 minus gamma. जिसको जो सिंपल लग रहा है वो यूज कर ले, क्योंकि सीपी गिवन है, सीवी गिवन है. यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा कि गामा को सीपी डिवाइडेड बाय सीवी से कैलकुलेट करोगे, बिकॉज सीपी सीवी इज गिवन. रफली इट विल बी 1.54 के आसपास ही. डायटोमिक है ना, N2 है. So now here in this case, T2 is given, T1 is given. What is T2? 154.52. What is your T1? 298. What is your CV? 20.8. What is your N? कैसे बता? 1, 2 कैसे बता? How will you calculate the number of moles? आइडियल गैस है, वेरी गुड. आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू nRT. कोई भी लगा दो, P1 V1 T1 लगा लो या P2 V2 T2, जो भी पता है वो लगा लो. एंड कैलकुलेट योर N एज P1 V1 by R T1. ठीक है. What is your P1 V1 by R T1? It is P1 is 10 मान लो, V1 उस टाइम पे क्या है 20. See, it is an atmosphere. तो R का units will be 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole. So इस केस में 20.0821 into temperature 1 क्या है 298. 298.15 लिखना है तो लिखो and calculate. Everything is given in the question. All you have to remember is the formula. Work done for an adiabatic reversible process can be equated to NCV/TT. और ये हमने NCV delta T क्यों लिखा है? क्योंकि this is the formula for delta U, and here delta U is equal to W. delta U क्या होता है? Q plus W. Adiabatic process में Q हमारा 0 हो जाता है, तो delta U is equal to W. W can be written as NCV into T2 minus T1. और एक और फॉर्मूला हमने करा था माइनस NR into T2 minus T1 upon 1 minus gamma. और हमने एक और भी करा था, that was minus N of P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma. पर हमने यूज करा है NCV into delta T because वो easiest था. वैल्यूज गिवन थी, हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा और आंसर निकाल लिया. क्या आंसर आया है? No one has found it. N क्या आ रहा है? 10 into 20 divided by this. So 30 मान लो तो I'll just check it out. The answer calculated is the number of moles is 8.18. The number of moles is 8.18. So then the final expression for work done would be, the final expression for work done would be what? 8.2 into CV. CV is what? Into 20.8
into your difference. So it is, the correct answer is minus 24,440. Leave the questions which require a lot of calculations to do once you go through all the questions quickly. जो जल्दी जल्दी वाले questions है वो पहले कर लेने चाहिए, और equations जिसमें calculations बहुत ज़्यादा है, you should keep them. अगर हो रही है जल्दी तो ठीक है, नहीं हो रही तो wait till you complete the rest. Next question. Calculate the enthalpy of combustion of ethylene gas from carbon dioxide and water at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. The enthalpies of formation are given for carbon dioxide, water. पहले जो information given है उसको jot down कर लो. There is some problem in the question. Question number 47. Calculate the enthalpy of combustion of ethylene gas forming carbon dioxide and water. So just solve it accordingly, quickly. What is the target equation? Ethylene क्या होता है? C2H4. Combustion of water is what? C2H4. Now C2H4 plus 2H2 is giving, sorry, 2. What do we want to do? We want to carry out the combustion. Right? Calculate the enthalpy of combustion of ethylene gas. What are the resultant products? Carbon dioxide and water. अब इसको balance कर लेते हैं. So this will be you have to tell the delta H for this reaction. So this is our target equation. इस तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 equations और given है. Enthalpy of formation of carbon dioxide given है. Enthalpy of formation of water given है. Water का क्या है? H2 plus half O2 is giving H2O, and we are given the enthalpy of formation of ethylene, that is C plus 2C plus 2H2 is giving C2H4, and the delta H is for this plus 52.3. For the rest is minus 241.8, and for carbon dioxide it is minus 393.7. So how will you do it? ये equation number 1 मान लो, ये equation number 2, this can be equation number 3. So twice of equation number 1 करके देखो, plus, क्योंकि हमें 2CO2 चाहिए और 2H2O चाहिए, right? So twice of equation number 1 plus twice of equation number 2, twice of equation number 2 minus equation number 3 should give you the answer. Okay? Look up here for a minute. ये हम हेसेस लॉ से करने लग गए. Now this question was based on हमारा टारगेट इक्वेशन निकालना था हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथिलीन गैस. तो हमने जल्दी से इथिलीन गैस की कंबशन की इक्वेशन लिख ली. उसका डेल्टा एच हमें फाइंड आउट करना है. इसका डेल्टा एच हमें फाइंड आउट करना है. बाकी सारी जो गिवन है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इस क्वेश्चन को हम एक मेथड और से कर सकते हैं. द सेकंड मेथड, लुक एट द सेकंड मेथड. फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है, फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन गिवन है. ये क्या है? जीरो, प्योर स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म, तो स्टेबल स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म.
तो ये 0 है, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच ऑफ वाटर माइनस डेल्टा एच ऑफ C2H4. ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, rather than writing these three equations and then thinking कि इसको कैसे रिजॉल्व करें. अगर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन इन सबकी गिवन है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको. कैसे? डेल्टा एच रिएक्शन विल बी इक्वल टू twice of delta H of carbon dioxide plus twice of delta H of पानी minus delta H of C2H4. ऑक्सीजन नहीं लिख रही अब मैं. So what is the final answer? इससे करोगे दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा. The answer will just be the same. A, ये आंसर बता रहे हो या minus 1323 kilojoules per mole. Units will be given. Next question. Okay, given the following thermochemical equations, you have to calculate the delta H of transformation of 1 gram of rhombic sulfur into monoclinic sulfur. ठीक है? ये again this question is similar to carbon graphite to carbon diamond. कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में. आपको इक्वेशन निकालनी है जिसके टारगेट इक्वेशन क्या है? S rhombic giving S monoclinic, क्योंकि हमें rhombic to monoclinic का ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी बताना है. So just do it quickly and tell me. Here you have question number. So this would be one gram atom बोला है. 1 gram atom is equivalent to 1 mole of one particular atom. 1 gram atom is considered to be 1 mole of that particular substance only. तो 1 ग्राम लिखा होता तो हम 32 ग्राम इक्वल टू करके फिर उसको डिवाइड बाय 32 करते. बट इस केस में इट इज 1 ग्राम एटम एंड यू गिवन द आंसर विद नो नन ऑफ दीज, सो यू आर नॉट कंफ्यूज्ड. सो द आंसर विल बी प्लस 2.5. सिंपल, वेरी सिंपल. अब किसी ने यस नहीं बोला. Enthalpy of solution of BaCl2 dot 2H2O and BaCl2 are given. अब enthalpy of solution सबको पता है? लिखो. I should be seeing everyone writing now. We are given enthalpy of solution. So what we have is BaCl2 dot 2H2O. ये solid. Enthalpy of solution मतलब इसमें मैंने क्या डाला? Aqueous medium. तो ये क्या बन गया? BaCl2 aqueous भी लिख सकते हैं इसको सिंपल. ठीक है, वैसे ही जैसे अभी करा है ना क्वेश्चन, इट विल बी जस्ट सॉल्व्ड इन अ सिमिलर वे. 8.8 गिवन है इसकी, 8.8 किलोजूल्स पर मोल. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अगेन यू आर गिवन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 सॉलिड. इसके अंदर एक्वस मीडियम डालेंगे. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज BaCl2. So delta H for this is minus 20.6 kilojoules per mole. I'm not writing the units again and again. Our target equation is हमें निकालनी है heat of hydration of BaCl2. It is just the same. So heat of hydration in this case will be BaCl2 solid plus क्या करेंगे 2H2O. बिल्कुल वही कॉपर सल्फेट क्वेश्चन जैसा. So that is giving us BaCl2 dot 2H2O solid. इसका delta H बताना है. So you are given these questions in this form. And again, equation number 2, I mean we had the equation number, this is equation number 1, this is equation number 2. Now again we can write the equation number 2 stepwise. इस equation को हम stepwise लिख रहे हैं. Equation number 2 can also be written as dot 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 BaCl2 solid plus 2H2O giving BaCl2 dot 2H2O solid. So let this be Q1
all right, and then BaCl2 dot 2H2O solid plus aqueous giving BaCl2 aqueous. Let this be Q2. So Q1 plus Q2 will be equal to minus 20.6 और आपका Q2 is already given in equation number 1. So this implies Q1 plus 8.8 is equal to minus 20.6. So Q1 is equal to minus 29.4 kilojoules per mole. This question is similar to finding out the heat of hydration of copper sulfate only. हमने सिर्फ एक इक्वेशन को पकड़ के उसको दो स्टेप्स में ब्रेक कर दिया है और फिर उसको लिखा है. This is only for the higher level questions. This question will only come at your higher level. I mean, where the competition is going to be. I mean, if at all, if it is going to be tough. जबकि इसमें है कुछ नहीं. You just have to understand कि हमने hydrated solid लेके उसको aqueous form में करा, फिर हमने ये normal anhydrous form को aqueous form में करा. We can split this equation number 2 into 2 steps. हमने इसको 2 steps में कैसे करा? पहले इसमें हमने पानी डाल के ये वाला solid बना दिया और फिर उसको aqueous करके ये वापस बना दिया. तो हमने फिर Q1 plus Q2 is equal to minus 20.6 कर दिया, जिसमें से Q2 was equal to this reaction only, and that is 8.8. Time चाहिए तो look into your notebooks if you have copied the equation again. Correct? So here we are just making use of Hess's law to do a calculation. So here in this case what we have is Q1 plus Q2 is equal to minus 20.6 क्योंकि हमने ये equation लिया. Now Q1 and Q2, this equation is similar to equation number 1. तो हमने उसका delta H उठा के इसमें डाला and finally we get the answer as minus 29.4. Done? 50th question now finally. Century ना सही, half century सही. This is the 49th question. Calculate the enthalpy of hydrogenation of ethylene given that the enthalpy of combustion of ethylene hydrogen. Now please solve it quickly. I think you've had enough practice of Hess's law today. So just practice it quickly. You do it and I solve it simultaneously on the board. Let's see who does it first. Minus the time of rubbing the board. Calculate the enthalpy of hydrogenation of ethylene. So what are we looking at? We are looking at hydrogenation of ethylene. मतलब C2H4 में हम H2 add कर रहे हैं और हमें पता है फिर हमें क्या मिलेगा. Hydrogenation means we'll get alkane C2H6. What are we given? We are given the enthalpy of combustion of ethylene. So C2H4 plus 3O2 is giving 3CO2 plus 2H2O. इसका delta H is given as minus 14010. ठीक है. Next you have the enthalpy of combustion of hydrogen, which is मतलब H2 plus half O2 giving H2O minus 286.2, and then you finally have C2H6 plus thrice C2H6 को हमें combustion करना है. What will we get is CO2 plus H2O. So we get 2CO2 plus 3H2O. कितने ऑक्सीजन बने? 4 plus 3 7. So that means 7 by 2 oxygen. ठीक है. ये equations तो सबने लिख ली होंगी या मैं first हूँ? So this is the normal equation that we have. Combustion means when 1 mole is getting burnt completely. ठीक है. तो C2H6 को मैंने combustion मतलब oxygen के साथ react करेंगे. What we get is carbon dioxide plus water. All right. And I have just balanced the reaction, nothing else. And the value given for this is 1560. Let's see who does it now.
Me or you? I'm doing it. Delta. So now the target delta H of the reaction here. We have to find out the delta H for this reaction. अब मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे C2H4 left में रखना है. So that means my first equation will remain just intact. ठीक है? तो first equation को intact रखते हैं. Then I want H2 also there. So I want to keep the second equation also intact. मेरे को C2H6 राइट में चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट में है, तो मैं थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके देखती हूँ. लेट मी सी इफ आई गेट इट. सॉल्व्ड. पर डेल्टा एच भी कैलकुलेट करना है. सो दैट मीन्स -1410 minus 286.2 minus 156 minus of 150.6 plus minus 135.6. Yes. All right. So the answer is minus 131.6. Any doubts to anyone? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथिलीन का मतलब है कि कोई भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब क्या? जलाना. कौन सा जलाना? टू बर्न इट. Burn it means you are making it react with oxygen. So then if you are talking about the combustion of ethylene, then in ethylene combustion what you have is you take ethylene, you make it react with oxygen, और हमेशा combustion के products सिर्फ दो ही होंगे. कौन कौन से? Carbon dioxide and water. So if you have C2H4, you make it react with oxygen. That will give us CO2 plus H2O, right? And that will give us CO2 plus H2O. We'll just balance this particular equation and then get the final answer. Is it balanced? Just check. ठीक है? Done? So enthalpy of combustion means कभी भी किसी का भी enthalpy of combustion होगा. That means we are talking about the reaction of that substance with oxygen. Okay? So I hope the doubt is clear that whenever we talk of combustion, we are talking about the reaction of the substance with oxygen, and we get only two products in this case, that is carbon dioxide and water. और फिर उसके बाद उसको balance कर दो, that is the reaction of combustion. And one more thing is to be kept in mind, carbon का combustion मतलब water नहीं मिलेगा, और hydrogen का combustion मतलब carbon dioxide नहीं मिलेगा. Okay. Now 51st question. The thermite reaction used for welding of metals involves this. What is the enthalpy change for this reaction? How do you know it? Just like that? Because it will just be Al2O3 plus Hp minus Hr. Very good. In this particular case, what is the enthalpy change for this reaction? इसका क्या होगा? 0. Aluminium का क्या होगा? 0. So it will be delta H of Al2O3 minus delta H of Fe2O3. And when you do that, you get the answer as A. Okay, next. Now we have very many sets of questions. I think before that, we can move on to other questions. Just take 2 more slides ahead. More. All right, you can try out this question. This is based on the application of Hess's law, which is nothing but from your Born-Haber cycle. Quickly do it. Born-Haber cycle में repeat कर रही हूँ. Delta H is equal to, you repeat it for me. S D I E U. Plus नहीं भी बोलोगे तो understood है. S plus D plus I plus E plus U. Repeat all of you. Okay. All right. Do it quickly. Do this question quickly. Shh, no talking, just do it. What we have is, we have to calculate the heat of formation of HF, KF here,
And in this case, Kf is equal to S plus D plus I plus E plus U. So will you be using the values as such? Once we do this, we can celebrate the half century like this. First, before that, we take up this question quickly. Calculate the heater formation of Kf from the elements. Iske andar there is one catch. Let me see who catches it. Here in this question, there is a catch. सोचने लग गए हो, कर रहे हो क्वेश्चन. डेल्टा एच इज इक्वल टू एस प्लस डी प्लस आई प्लस ई प्लस यू करके किसी ने देखा है कोई आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? Is this expression correct? Is this correct according to all of you? Just look here. I've put it in a very bad handwriting. I mean, it comes badly when one is tired. So S plus D plus I plus E plus U. तो 87.8 sublimation energy. Dissociation energy किसका है? F2 का. मेरे molecule में क्या है? सिर्फ F. So that means my dissociation energy needs to be divided by 2. This is the only factor which needs to be considered, and once you just club it, then you will get the correct answer. So what you have is S plus D plus I plus E plus U, in which what you have is your D is to be halved. And then you get the answer. Please get the answer and let me know. इसका अगर मैं Born-Haber cycle बनाती हूँ, in the meantime you do the addition, and Born-Haber cycle would be you are finding out the delta HF for this. इसका क्या था? पहले हम sublime करेंगे, फिर हम इसको ionize करेंगे, पहले dissociate करेंगे, then we get electron affinity, A. Last question. Done? A is the right answer. The answer is coming out to be minus 560.8. And why are we getting minus 560.8? Because dissociation energy is halved. Only then you will get the answer. Otherwise, you will not get the correct answer. Next question. Calculate the heat of formation of NgF2 from its elements. Now it is MgF2. इस चीज का ध्यान में रखना. And again, this is an application of the Hess's law of constant heat summation, which is your Born-Haber cycle that you have done in one of the previous topics also. The normal formula holds good for this case again. So what you have is, you have your delta H to be equal to S, D, I, E, U. Are you all tired? So what is it? Delta H is equal to S, D, I, E, U. इसका मैं जल्दी से Born-Haber cycle बनाती हूँ. But just let me know, in this case, do you need to halve the dissociation energy? No. But then you need to do something extra. Again, there is a catch in this question as well. नॉर्मल क्वेश्चंस में S प्लस डी प्लस आई प्लस ई प्लस यू आराम से मिलेगा. डी को हाफ सिर्फ तभी करना है जब क्वेश्चन में मेरा फाइनल फॉर्मूले में एक एटम हो और वैसे Cl2 या F2 का दे रखा हो. तो इस केस में हमारा क्या होगा? Mg, I am drawing the Born-Haber cycle for this and you try and solve it in the meantime.
check the bond neighbor cycle once. Look up onto the board quickly, all of you. यहाँ पे ये डेल्टा एच एफ होगी हमारी रिएक्शन, ये रिएक्शन एक तरफ, all the steps on the other side, because Hess's law of constant heat summation says that whether the reaction takes place in a single step or in several steps, the net heat energy remains the same. All right. So here in this particular question, what we have is dissociation energy को हमने half नहीं करना. क्यों? क्योंकि F2 की given है, हमें दोनों F चाहिए. So in the formula, so D will be as such. S D जो भी value given है as it is use होगी. Ionization energy in this case is first ionization energy plus the second ionization energy. तो I is also acceptable क्योंकि sublimation energy of Mg is the ionization energy is given for Mg to Mg2 plus. Now here electron affinity is given only for one F, F to F minus. तो इस केस में electron affinity क्या होगी? डबल. तो जो भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की दे रखी है उसको डबल करके आंसर निकालना है. सो ऑप्शन नंबर ए व्हिच इज -1102.6 kilojoules per mole. All right, now we come back to question number 49. Doubt है? So we left with almost 40 questions for today, but then never mind. Halfway through, we have enthalpy of solution for BaCl2 dot 2H2O and BaCl2 are given as 8.8 and -20.6. इसमें हमने क्या करना है कि हमने दो इक्वेशंस बनानी है. हमें हीट ऑफ हाइड्रेशन गिवन है BaCl2 की. पहली इक्वेशन BaCl2 प्लस aqueous, BaCl2 solid plus aqueous giving me BaCl2 aqueous. We have to find out the, so one equation for the enthalpy of solution is BaCl2 plus aqueous giving BaCl2 aqueous. Uska heat of solution is given as -20.6. Another equation will be BaCl2 dot 2H2O solid plus aqueous is equal to BaCl2 aqueous. ठीक है. और हमारा टारगेट इक्वेशन क्या है? टारगेट इक्वेशन हमारा है BaCl2, the target equation in this case is BaCl2, we have to find out hydration, so that means we have to find out BaCl2 aqueous plus or solid, plus 2H2O giving BaCl2 dot 2H2O solid. ये हमारा target equation है, right? This is our target equation, and what we are doing is हमें एक equation given है BaCl2 solid plus aqueous giving BaCl2 aqueous. इसका डेल्टा H हमें given है, इसको हम डेल्टा H मान लेते हैं. ओके, दिस इज हैपनिंग एट वन सिंगल स्टेप. इसी को हम दो स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं. दिस प्लस 2H2O गिविंग BaCl2 dot 2H2O. So this will be say Q1 and BaCl2 plus aqueous, इसको हम सेकेंड स्टेप में ब्रेक कर देते हैं. This is our Q2. All right. So then we have Q1 plus Q2 is equal to delta H. What is delta H? Delta H in this case for BaCl2 heat of solution is -20.6. Q2 is already given to me क्योंकि heat of solution of BaCl2 is again given. What is that Q2? That is equal to plus 8.8. तो मेरा Q1 मुझे find out करना था, and this is what it is. So that is -29.8. All right. Please look at the question carefully. Note कर लो and be thorough. This is like a level 2 question, a higher level question. So I hope you all have had enough practice of thermochemistry today.
For at least the Hess's law of constant heat summation. And for the work done isothermally and adiabatically, you can refer to the previous lectures again. All the best for your test today. Thank you.